3, 2, 1. Akbar Chaudry. How are you doing, Akbar? All good, yeah. How are you? Fantastic. It's been a long time coming. It's been a while indeed, yeah. But first of all, congratulations. This is an amazing setup. Much prefer it over the previous bondage room. लेकिन उससे पहले ठीक हो गया था, आप आए नहीं थे सिर्फ. but Bondage room. mashallah, yeah, so happy for you, and this is amazing. Alhamdulillah. Akbar bhai, thank you for coming and thank you for being so nice. But congratulations are also in order from here. Because you sold out comedy shows in America. Yes, yes. That happened. That पता नहीं यार, ये तो अभी भी थोड़ा surreal लगता है. You know, there's something चल रहा होता है दिमाग में कि यार ये करूँगा किसी दिन, और फिर वो हो जाता है. So it takes a while for that to sink in. But performing internationally was always a dream, and Allah ka shukar hai. Alhamdulillah. Because of, you know, the videos getting the traction that they have, उसकी वजह से एक following amass हुई. And it wasn't just America. Start हुआ जद्दा में. पहला शो जद्दा में था, फिर दुबई में था, and then 7 cities in the US. All sold out. Pretty much, except New York City. लेकिन I will give myself that समझ लें a cushion, because I announced it 3 days before the show, and it was a Wednesday night. So considering that, it was 70% capacity. In 3 days in America, in New York. Yeah. So that's not too bad. No. That's beautiful. And that was the most memorable show of the entire trip for me, because एक stand-up comedian की bucket list में न्यूयॉर्क सिटी के एक कॉमेडी क्लब के एक रेड ब्रिक बैकग्राउंड के सामने परफॉर्म करना एक है, होता है. एक उसकी एक अपनी जगह है. बिल्कुल. आई थिंक इफ यू वर टू ट्रांसलेट दैट टू कराची टाइम, दैट्स लाइक 1 घंटा पहले मैंने बताया और मैंने बोला कि क्लब 432 पहुंचो और फुल हो गया. इट्स द सेम, आई थिंक. न्यूयॉर्क है. इट्स फ्रिकिंग न्यूयॉर्क. You know, everybody is so busy there. Yeah, I was surprised कि लोग आ भी गए. लेकिन काजी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यार, जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानीज हैं, they are just so wonderful, loving people. इतना प्यार मोहब्बत, just based on, you know, the stuff we do here and they see over there. This is amazing. Why do you think? Is that because there's a longing for Pakistan, or is it a longing for Pakistan to become better? क्या scene है? I think it's all of that, and there's this deep sense of because मुझे लगता है, पता नहीं ये गलत भी हो सकता है, but कोई शायद खुशी से नहीं छोड़ के गया, या majority खुशी से नहीं छोड़ के गए, मजबूर होंगे किसी वजह से. You know, बहुत सारे लोगों के लिए the last straw that broke the camel's back, वो वाली situation होगी. तो कोई अपना जब बंदा आता है, अपनी ही बातें करता है. मेरा जो शो था स्पेशली, वो एक बड़ा स्पेसिफिक शो था. It was like a nostalgia of growing up in Karachi in the 90s. Majority crowd वहाँ है भी 90s, कराची का. तो and similar age. तो it was just a very, I think, wholesome sort of experience for everybody involved. You know what's strange is I grew up in Karachi and Hyderabad, and I went much later. But because I was there for about 7-8 years, मुझे goosebumps हो रहे हैं. If I had run into you there, I think I would have been very much yes, absolutely, give me that. I think I have an anecdote though, and ये इसको generalize करना चाहें तो कर सकते हैं. But so I would routinely meet cab drivers, Uber drivers, not cab drivers, sorry, Uber drivers. Uber drivers driving Teslas. Oh, wow. ब्राउन पाकिस्तानी उबर ड्राइवर्स ड्राइविंग टेस्लास. 2-3 मुझे ऐसे मिले. टेस्ला का चला रहा है, कोई रेंज रोवर चला रहा है. I'm like, what are you doing? He's like, I'm just bored. And जैसे ही उसको पता पड़ा ना कि उर्दू first, अच्छा, this is the other thing. This is how insecure we are in our identity, unfortunately. पहले मुझसे पूछते हैं हिंदी आती है. मैंने बोला उर्दू आती है. He's like, कहाँ से हो? मैंने बोला कराची से. Then it just starts breaking down, right? And I would often find these people would have 3-car garages. That's a big deal there. 3-car garage is a huge deal there. Mansion type घर हैं, but just no happiness. And you don't understand why. वो जो खुशी नहीं है ना. Even मेरा अपना scene थोड़ा सा ऐसे ही था कि me, my siblings, my mom, we were all there, and for all intents and purposes, alhamdulillah, सब कुछ था. Immense privilege. Allah का बहुत करम है. And my mother and my father worked extremely hard to get us there. But when we got there, and now we have the house and we have the cars, alhamdulillah, मतलब ऐसे नहीं कि Ferraris थी,
बट ऐसा भी नहीं है कि गंदी गाड़ियाँ थी, अच्छी गाड़ियाँ थी, साफ सुथरी गाड़ियाँ थी, एंड मतलब वी कुड गो वेयर एवर, डू वट एवर. No happiness for some reason. You know, speaking of that, in the larger context, and you are someone who enjoys frequenting बाहर के मुल्क and everything, would you consider moving क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं because of the हालात? नहीं यार, and also I would like to come back to what you said right now, but to answer your question, nahi, because I feel like I had that decision and I made it जब मैं masters complete किया था. So everything alhamdulillah was great. I could have stayed there, done a great job, साथ साथ comedy भी अच्छी चल रही थी, started getting paid work there. तो आई मेड दैट डिसीजन, एंड मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ कि एक बस दफ़ा अब जब ले लिया फैसला, एंड यार अल्लाह का शुक्र है यार, मतलब वही प्रिविलेज वाली बात, डिस्पाइट द मैनी फीलिंग्स ऑफ आवर स्टेट, अभी भी मेरे लिए वो पॉइंट नहीं है कि यार बस अब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा. दोस्त अच्छे हैं, घर वाले अच्छे हैं, कॉमेडी अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह. काम अच्छा चल रहा है, मज़ा आता है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ ये वाली चीज़. बट जो आप कह रहे थे ना, ये बात मैंने आपको मैसेज भी किया था कि वंस यू गेट देयर हैप्पीनेस नहीं है. सो दिस इज समथिंग आई वाज रिसेंटली स्ट्रगलिंग विद. वो और इस तरह था कि ऑल माई लाइफ तो नहीं, बट फॉर मे बी मेजोरिटी ऑफ माई अडल्ट लाइफ कुछ गोल्स थे दिमाग में कि ये करना है, वो करना है, फलां करना है. सो इस साल में एंड प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ मटेरियल चीज़ें थी, कुछ प्रोफेशनल चीज़ें थी, कुछ पर्सनल थी. फॉर एग्जांपल ये टूर था, ठीक है, इंटरनेशनली परफॉर्म करना था. फिर टूर के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फ्लोरिडा में था, तो उस वक्त मुझे पता लगा था कि एक अल्ट्रा मायामी फेस्टिवल होता है, ठीक है, एंड दैट्स एन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल, जहाँ ये Okay. सारे बड़े बड़े टीएस्टो, आर्मिन वैन ब्यूरन, मार्टिन गैरिक्स, इस टाइप के, वो तो मैं हमेशा जाना है. उस वक्त नहीं होते थे पैसे इतने कि ये सब हो सके, तो मैं टूर के बाद ये देखने गया, ठीक है. Oh. फिर उसके बाद वापस आया, उसके शायद 2-3 हफ्ते बाद सर्बिया चले गया. स्टीव वाई एक वर्चुओसो गिटारिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ द रीजंस आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार, तो उनका कॉन्सर्ट देख लिया. 2-3 और चीज़ें हो गई. उसके बाद ना मैं थोड़ा लॉस्ट फील करने लगा, एंड दिस हैज़ ओनली बिकम बेटर मे बी इन द लास्ट वीक एक्चुअली. सो उसमें था कि यार नाउ व्हाट वाला एक क्वेश्चन आ गया. For the man who has everything. मतलब हाँ, नॉट नॉट इन दैट हाँ. के सब नहीं, लेकिन एक एक तरह से कि आपने अपने लिए जो गोल्स डिफाइन किए थे कि यार ये लेना है, हाँ. फैमिली वालों के लिए ये करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, कभी सोचा नहीं था ये पूरे हो जाएंगे. अभी जिस कंडीशन में मैं हूँ ये सब हो गया है, अब क्या करना है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैंने इस पे एक्चुअली रिसर्च की, एंड टर्न्स आउट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द अराइवल फैलेसी, ठीक है. एंड दैट इज़ के वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस या कंटेंटमेंट या फुलफिलमेंट. नॉट दैट नहीं है इन चीज़ों में, बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट, इट डज नॉट लाई इन द डेस्टिनेशन. It does Alright. not lie in the fulfillment, yeah, getting it, so to speak. It is always about the process, yeah, or the journey. And once I was able to, thoda percolate hua dimag mein and sort of internalize it, I had this renewed vigor and passion for the videos that I make. That's तो आपने fantastic. Yeah. शायद नोटिस किया हो, पिछले हफ्ते में मैंने 3 वीडियोस डाल दी हैं, Yeah. Yeah. जो कि सारी वीडियोस एटलीस्ट 10 मिनट की हैं. सबसे बड़ी वीडियो भी डाली जो 14 मिनट की है. यूजुअली दिस वुड हैपन अक्रॉस 3 वीक्स, Yeah. ये मैंने एक हफ्ते में किया. तो एंड दिस ऑल्सो टुक मी टू, सॉरी मैं अगर लंबी कर रहा हूँ या बोर कर Please, रहा it's a हूँ. podcast. What the fuck? जब मैं स्टीव वाई के कॉन्सर्ट में गया था ना, तो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी प्रिविलेज्ड, आई वाज Alhamdulillah. able to get a VIP ticket. What that VIP ticket included was a 45-minute meet and greet with Steve Vai. Oh wow. This is a guy who's 65 years old. He's touring the world. उनका अभी जो चल रहा है वो नेक्स्ट ईयर क्रिसमस में ख़त्म होगा. तो उनसे किसी ने पूछा कि यार आप ये इस उम्र में ये कैसे कर रहे हैं. एंड ही सेड कि यार इट्स, आई जस्ट लव, या आई हैव forced myself to fall in love with every aspect of my craft, be it traveling on an airplane या waiting in line at airports, जाके किसी इवेंट या वेन्यू पे साउंड चेक करना, इस तरह की जो आसपास की जो ट्रिवियल चीज़ें होती हैं ना, इट्स नेवर अबाउट
कि यार आज मैं कॉन्सर्ट जो कर रहा हूँ या वो इट्स उसके जस्ट numbers क्या होंगे, हाँ पैसा क्या होगा? No, it's not the big things. एग्जैक्टली सो Not the देन big. आई took all of this internalized it so now it's like यार मैं जो एडिट कर रहा हूँ मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, मैं जो थंबनेल बना रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन लिख रहा Yeah. हूँ, जो मैं जोक को रीवर्ट कर करके उसको एक फाइनल शेप दे रहा हूँ. So that whole process part is what is going to uh, give perhaps an artist, yeah, even in the broader context, just give you that longevity and not that feeling of emptiness. I think that's super powerful, and I think that's fan fucking tastic that you say it like that. I think वो दो तीन philosophers के quotes आ रहे थे और पे चले गए दिमाग से जैसे होता है. But I think a few people have said कि आप जब when you will look back ना सब कुछ हो जाएगा, आप कामयाब भी हो जाओगे. मैं बस दुआ दे रहा यार ज़बरदस्त मर गया मेरे लिए दुआ छोड़ के गया. But he was like and then when you look back, the years of struggle will seem the most beautiful because struggle आप किस चीज़ से कर रहे हो? You're struggling for your destiny. And people argue that the pursuit is the goal, Exactly. right? And to that end, one of the most pertinent things that happened recently was I was listening to a podcast या क्या, और उसमें ना किसी बंदे ने ये बोला कि यार देखो, here's what you can't do. You can't beat someone in a foot race who loves running. He's winning from when they say go. आपके लिए वो एक इंस्टेंट होगा जिसमें डोपामिन भी आकर रश होगा, आप फिनिश लाइन क्रॉस करोगे, आपने उसको हरा दिया, एंड देन उसके फौरन बाद क्या होगा, तकलीफ होगी. यू रैन अ रेस एंड योर बॉडी इज टायर्ड एंड योर माइंड एंड ऑल द ट्रेनिंग यू डिड फॉर दैट वन थिंग. When he was training, he was happy. He Yeah, had already exactly. won. When he was running, he was happy. Yeah. He lost, he's happy. Yeah. He won all the way through, na? So I think that's super powerful. And usse bhi zyada, I think what's if you fall in love with the editing process, because as a comedian, the edit is probably your most powerful tool anyways, because a comedian is a writer, and writing, 80% of writing is editing. Bilkul. People need to understand that, Yeah. right? So if you take your video editing to be another form of that, I think never ending wala supply hai of just okay, this is what I do, this is the work I do. Yeah, exactly. I think that's powerful. Do you think, like, why did it take you this long? How long did it take you to come to this point? How long did it take? I would say यार 3 or 4 months मैं इस चीज़ में पड़ा हुआ था कि now what. क्योंकि हुआ क्या था इस साल बेसिकली दिसंबर 25 या 26 को मैं इजिप्ट से वापस आया था वेकेशन से, ठीक है? 2022 में. हाँ, उसके बाद से लेके इस साल मार्च 18 तक देयर वाज नॉट अ सिंगल डे दैट आई टुक ऑफ, बिकॉज एक तो अपना काम चल रहा था, साथ साथ टूर की प्लानिंग चल रही थी. तो दिस इज मे बी लाइक 90 days या मे बी 85 या 80 days ऑफ जस्ट कॉन्स्टेंटली वर्किंग. एंड यू नो व्हेन यू आर इन द थिक ऑफ इट, तो एज सच आपके ये फीलिंग्स मैटर नहीं करती and shouldn't matter. You're like बस ये एक है, you just focus on one thing कि ये accomplish करना है. So जब ये सब कुछ हो गया और अचानक से एक बोझ उतरा ना, फिर एक वो क्वेश्चन आ गया कि अब क्या करना है. तो उस सवाल को it took a while to answer that question. But when did you start envisioning this tour? Because you've been doing comedy now, you said, I think 15 years. A little more? Stand-up comedy specifically, I think 12 years. 12 years, Yeah. right? And comedy 15? हाँ, तकरीबन. हाँ, ठीक है. When did you start envisioning, when did you consider कि okay, यार, I might be good enough to do it like this? Tour type. Yeah, I think that's an interesting question. I can't point to maybe one instance specifically, लेकिन very early on जब लॉल वाले हमारा जो इम्प्रोव जी, ग्रुप जी, है, जी. उसमें हम 5 बॉयज़ हैं. आई थिंक वी स्टार्टेड इन 2012 एंड 2014 में या 15 में आई थिंक हम पहली दफ़ा लाहौर इस्लामाबाद गए परफॉर्म करने. Okay. And that is just something, that's just the most enjoyable aspect of the whole thing. Being on the road. Yeah. Being on the road with your best friends, I would like to qualify. Okay. And stand-up comedy फिर थोड़ा मुश्किल इस तरह हो जाता कि आप अकेले हैं. So you're dealing with everything on your own. You know, when generally आप किसी के साथ
ट्रिप पे भी जाएं, जब कोई बंदा साथ होता है, एक सहारा होता है, बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं. काइंड ऑफ द सेम विद दिस. बट या उस पॉइंट पे हुआ कि यार ये तो बड़े मज़े का काम है, इससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आ रहा. हुँ, तो एज लॉल वाले हमने भी काफ़ी टूर किया. एक पॉइंट था 2018 या 19 में, हमने 19 में वी अप्लाइड टू इम्प्रोव फेस्टिवल्स इन यूरोप. हुँ. We got in to the festivals in Sweden, Denmark, Iceland, and one other place. Wow. We had 4 shows lined up. 3 फेस्टिवल के थे. एक थे स्वीडिश पाकिस्तानी एम्बेसी इन स्वीडन, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. एंड वी हैड मतलब एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. मैकडोनल्ड्स गेव अस स्पॉन्सरशिप टू कवर ऑल द कॉस्ट. एंड सबके वीज़ा रिजेक्ट हो गए. Oh no, dude. फिर नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई किया. अमेरिका में 4 shows बुक हो गए. एंड शिकागो, ह्यूस्टन, इस टाइप की भी जगहें थी. एंड सम एक्सट्रीमली ऑब्सक्योर प्लेस, आई डोंट नो मिजूरी में था या पता नहीं कहाँ पे था, सेंट क्लाउड, मिनेसोटा में शायद. बट एनीवे 4 shows देयर एज वेल, ऑल पेड शोज. उसके भी सब पैसे हो गए, टिकट्स खरीद लिए, सबके पास वीज़ा था, एंड कोविड हैपेंड. And you know, around that time, March 2020 is when it started peaking in Yeah. America. Yeah. तो हमारे शायद फ्लाइट से कुछ ही दिन पहले सब चीज़ें ना वहाँ बंद होनी शुरू हो गई. तो इसका भी एक एस्पेक्ट था कि यू नो सो क्लोज येट सो फार So वाला. far away, so far away. तो took a while, but took a while. eventually ये मार्च 2023 में ये ड्रीम रियलाइज हो गए. Alhamdulillah, that's fantastic. Yeah. So it's been this long that you've been doing stand-up comedy. Have you always done, because अब आपका there is an Akbar Chaudry brand of stand-up comedy now, alhamdulillah. खैर मैं तो you know me, मैं तो अगर कोई मुझसे पूछता है, I'm like basically Dave Chappelle है, if Dave Chappelle wasn't, you know. नहीं you are too kind. But yeah, but I say it very seriously though. मतलब आपसे अभी हंस के बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता हूँ हाँ ये ऐसे ही है. But and then like you're crazy. Sure, maybe. But Behral, you have your own. Even if you're not that good, I think you're enjoying yourself so much कि inshallah you have the next, Allah आपको हयाती दे 30-40 years, and who knows. मुश्किल लग रहा है अभी जो जिसम में जा रही हैं चीज़ें, जो नोशी हो रही है जो रेकलेस अबैंडन के साथ मॉन्स्टर्स और रेड बुल्स पी जा रही हैं. खाने पीने की कंजम्पशन है. मुश्किल लग रहा है, बट अल्लाह हयाती दे, अल्लाह हयाती दे. एटलीस्ट 10-15 की तो कोशिश है. Come on, dude, ऐसा नहीं करो यार. What's it called? But what? So there's obviously, I'm sure there must have been an evolution in your comedy. Yeah. What was that evolution, and how much of that was conscious? I think I would say जो सबसे जो बड़ी रियलाइजेशन कह लें, या आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर इट एग्जैक्टली, was when I was doing the morning show on Dawn News. ठीक है, दिस इज़ 2020. उससे पहले 2019 एंड 2020, उससे पहले ये था कि आई टोल्ड यू अर्लियर, मुझे बड़ा शौक था. मैं तकरीबन सारी कॉमेडी इंग्लिश में करता था, और कोशिश होती थी कि मुश्किल अंग्रेज़ी में करूं, क्योंकि व्हेन आई वाज इन स्कूल, दिस इज़ FPS, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल. सो ग्रेड 8 में वी वर आस्क्ड टू रीड फॉर our English literature class, The Prince and the Pauper, by Mark Twain. एंड उसमें ना वो क्या कहते हैं, विक्टोरियन इंग्लिश होती थी, और वो उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ था. उसके बाद हमने ओलिवर ट्विस्ट पढ़ी थी, और इस तरह की एक आध किताब. Fantastic books, by the way. हाँ, वो वाली जो ज़बान थी ना, उससे मुझे हुआ कि यार एग्जैक्टली यही करना है भाई, इसी तरह बात करनी है. तो आई वॉज एक्सट्रीमली moved by that sort of that language. So उसकी वजह से एक बन गया कि यार I would like to be able to speak well, eloquently. Yeah, eloquently. And उसकी वजह से बड़ा फ़ायदा भी हुआ कि मैं देखता था आसपास के बच्चे SATs का जब टाइम आया तो वो ना फ्लैश कार्ड्स याद कर रहे होते थे. I was like यार ये तो सबको ये तो पता होने चाहिए. And this is no way to learn, by the way. this is no way to learn. अगर कोई देख रहा है कि अपनी वोकेबुलरी अच्छी करनी है, फ्लैश कार्ड्स के नहीं होगी. You need to read books. Just read a book. Yeah. And there was a time मुझे याद है यार, मैं दिन के 15-20 सिर्फ आर्टिकल्स ही पढ़ता था. And I used to read a lot. Anyway, that's the point. तो हाँ, that sort of seeped into my comedy. I really enjoyed it. And I got a very, क्या कहते हैं, niche audience around it as well. लोगों को भी मज़ा आता था वो क्या कहते हैं, नॉन लीनियर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स से, और
आर्काइक किस्म के अल्फाज के इस्तेमाल से एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग नहीं बोलते, और बोलते भी हैं तो इस टाइप की अंग्रेज़ी नहीं बोलते. आई हैड अ वेरी नीश सॉर्ट ऑफ ऑडियंस, बट वो चल रहा था. एंड देन द आई वुड से द टर्निंग पॉइंट वाज दिस मॉर्निंग शो ऑन डॉन न्यूज़. So what that forced me to do was, for a year straight, every morning for 2 hours, I would be forced to speak in Urdu and forced to speak with people who are different in terms of everything. मतलब vocation कह लें, profession कह लें, socio economic class etc. And उसकी वजह से मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा खालिस इम्प्रूव हो हो गई. गई. खालिस तो अभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बेहतर हो गई. ओके. उससे साइमल्टेनियसली ये भी रियलाइजेशन हुई कि हमारी जो आम आवाम है, जो हमारे मासेस जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली क्या देखते हैं या क्या पसंद करते हैं या क्या समझते हैं. सो विद ऑल ऑफ दैट स्टैंड अप एक्सपीरियंस एंड दिस ऑन टॉप ऑफ दैट, इसी के अराउंड देन कोविड हिट, एंड इसी के अराउंड द गिग एट द टीवी स्टेशन वाज अप. तो देन आई वाज इन दैट पोजीशन कि यार आप घर बैठे हुए हैं, शोज़ कर नहीं सकते, टीवी वाला शो ख़त्म हो गया है, तो अब क्या करें? तो मैंने कहा चलो यार वीडियोस बना लेते हैं, कोशिश करते हैं. आप अगर गौर भी करेंगे, रैंटी रोने की पहली से लेके चौथी एपिसोड जो है उसमें इंग्लिश है. हाँ. 5वीं से लेके ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू आप देखेंगे होती जाती है, श्योर. क्योंकि दीज वर द फर्स्ट 4 एपिसोड्स वर मेड एट अ डिफरेंट टाइम, एंड 5th ऑनवर्ड्स वाज पोस्ट, मतलब वंस कोविड हैड स्टार्टेड. तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आने लगा. हाँ. मुझे भी इनकरेजमेंट मिली, मोटिवेशन मिली. वो शुरू के जो नंबर्स होते हैं, आपने भी रियलाइज़ किया होगा, बड़े वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले ओहो होते हैं हो वंस या. कुछ वायरल हो जाए. हाँ. सो वो उसके साथ साथ इनकरेजमेंट भी थी, साथ साथ फिर ब्रांड्स भी आने लगे. तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम था टू सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट एंड रियलाइज़ कि यार वही बात जो हम शुरू में कर रहे थे कि अपना आर्ट वगैरह ये वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर इसके थ्रू कमाना है, सस्टेन करना है अपने आप को, अपनी फैमिली को, स्पेशली एट द एज वी आर एट, कि जब ख़ानदान वाली जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, सो देन आई फील परहैप्स कि इतना कोई सेक्रीफाइस कह लें या क्या, पर्सपेक्टिव शिफ्ट या पैराडाइम शिफ्ट इतना बुरा नहीं है. I went through, obviously not to the same level as you. I went through a similar thing, क्योंकि मैं भी, आप याद करो, शुरू में जो इवन शॉर्ट फॉर्म पॉडकास्ट तो थी, प्राइमरीली इंग्लिश में होती थी. बिल्कुल बिल्कुल. और जो इवन द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता था शुरू में, इट वाज laden with lots of heavy vocabulary, Exactly. because that was the पढ़ाई. I'm not flexing so much as वो, मतलब मैंने That's अगर who you are, हाँ, और मैंने अगर basically. सीखा सॉक्रेटिस हाँ. इंग्लिश में, मैं क्या करूँ? बिल्कुल. तो but then when I started translating it is where I saw the thing, and You saw your numbers going up, right? Alhamdulillah, ji, Yeah. ji, I saw the numbers going up. But then with that, I did feel, and I don't know how, if you, matlab, what you think about this. I did feel कि maybe at some level I pandered too much, right? At some level मैंने इतनी ज़्यादा उर्दू इस्तेमाल कर ली, क्योंकि उर्दू भी या तो मैं बनावटी कर रहा हूँ, बनावटी अगर नहीं कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से, जिस तरीके से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल उर्दू, बट आप वीडियोस में देखो ऐसी उर्दू थोड़ी होती, बिकॉज आई एम ट्रांसलेटिंग माई इंग्लिश Right. इन डायरेक्टली इनटू उर्दू के यार. Yeah. ओके, व्हाट इज द ट्रांसलेशन और द ट्रांसलिटरेशन ऑफ कॉग्निसेंस? नहीं पता है इज व्हाट यू शुड यूज, Yeah. राइट? You shouldn't use cognizance. You shouldn't use these things, right? Exactly. Madde nazar. Who uses madde nazar ya zariya Yeah. maash? Who uses those things, right? So I felt like I was moving maybe a little too far away from what I wanted to do with my thing. Is that something that you felt also? Maybe initially, but यार आई डोंट नो यार, थोड़ा ये इस पे ना बैक एंड फोर्थ चलता रहता है अपने दिमाग में. बट आई फील लाइक कि आर्ट्स को जनरली ना, हम आर्टिस्ट लोग भी, ये भी बड़ी एक प्रिटेंशियस बात है, हम आर्टिस्ट लोग, आई फील लाइक वी रोमांटिसाइज इट टू मच. A little too much, yeah. मतलब at the end of the day, it's like any other job, right? Yeah, you have to show up to work, yeah. You are working right now. I'm working when I'm doing comedy. तो मैंने, I think what was maybe again another turning point for me was I started divorcing my identity completely. मतलब कि मेरी identity टोटल में ये नहीं है कि that I am a comedian.
You know, Oh, this is something I do, like somebody else is a banker is something that they do. मैं साथ में शौहर भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, मैं दोस्त भी हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको खाना-पीना भी पसंद है, जिसको स्पोर्ट्स का शौक है, जिसको दुनिया घूमने का शौक है। यू नो, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। So when I feel like when you sort of get off that self-created pedestal yeah, sure. and you realize that you're not that special. It's just something that is a job. I think the colloquialism, English colloquialism, is you need to stop being precious Yeah, about your yeah, shit, yeah, right? yeah. Like just okay, fine, whatever, हाँ, right? When did that turning point occur though, and what brought it about, if you can यही था remember? जो तो मैंने आपको बताया। कि पैसे आना शुरू हो हाँ, गए, कंफर्टेबल हो गए बिल्कुल, आप। बिल्कुल। और उसकी जब जब आपकी these are complicated things to explain, या maybe I'm not too good at doing that, but हाँ, ये मुझे एक था कि यार मतलब लेट्स से मैं अपना आर्ट करता रहता हूँ फॉर द नेक्स्ट या foreseeable फ्यूचर या ठीक है, टिल द एंड ऑफ माय लाइफ ठीक द है। वे आई वांट टू डू इट। क्या फ़ायदा ऐसा आर्ट करने का अगर आप भूखे मर रहे हो, आपको लोग ज़लील कर रहे हैं कि आपने यू नेवर मेड एनीथिंग आउट ऑफ योर लाइफ। क्या फ़ायदा है इसका? अपनी खुशी के लिए बस, मतलब अपनी खुशी भी क्या क्या खुशी होगी इसमें कि आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, हुँ। या अपने आप को बस वही हुँ, ज़िम्मेदारियाँ हुँ, 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 हुँ। एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। दुनियावी चीज़ें अच्छी खासी मैटर करती तो है ना यार कि या आप मतलब कमा रहे हो, ये एक है। और स्पेशली आई फील लाइक फॉर मेन their sense of self-worth is sort of tied to their profession as well. I think super powerful in that is the concept of responsibility. Hmm. I think मतलब जो स्टडीज़ की गई हैं अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, आई शुड प्रॉब्ली स्टार्ट कोटिंग देम बिकॉज़ मैंने पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो पूरी याद नहीं होती मुझे। आई शुड हैव देम इन फ्रंट ऑफ मी, ताकि बिकॉज़ पीपल लाइक वो कोट कर दिया करें पूरी। अबे मेरी बात सुन रहा है तू? बात नहीं सुन रहा तो फिर क्या फ़ायदा पड़ता है मैं करूँ या ना करूँ कोट? बहरहाल, अम, studies हैं that determine that if a man is given responsibility, he will clean up his act. Hmm. He will try and do better. वो वाली बात है। एंड one of the biggest criticisms that's levied against men is ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। Hmm. आप देखो what that does to a man। अगर एक आदमी जो है स्पेशली जिम्मेदारी नहीं उठाता है, राइट, बाकी पैशंस भी परस्यू कर लिए, एंड दे चेस्ड स्कर्ट्स आल्सो, एवरीथिंग दैट दे वांटेड टू डू, दे कंज्यूम्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रग, डिड एवरीथिंग, राइट, बिल्कुल। बट दे अबैंडन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उनको आप देखो उनके साथ क्या हो रहा होता है। हाँ, वो जो होते हैं वो इन देमसेल्व्स बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, because I think responsibility is something that keeps us anchored या more than anything else, इसकी यार जिम्मेदारी है। बिल्कुल। And I think that's super powerful. And I think हम जो है ना, it's not that we don't take responsibility, it's just that we take the wrong responsibilities as artists. As artists, अब जैसे मैं आपसे ये बात करता है, you were scolding me, sort of. It was प्यार से डांट रहे थे आप। Where I was like कि अकबर भाई ये जो सब लोग हैं, ये जो है ना इतनी तकलीफ में है ये लड़के। एंड द थिंग इज आफ्टर अ व्हाइल वही वाली बात है, व्हाट्स माय एक्चुअल रिस्पांसिबिलिटी? माय एक्चुअल रिस्पांसिबिलिटी इज टू माय फैमिली, या is to the people around me, the people that I love, right? And to my friends. उसके बाद हाँ, these people are my responsibility, but it needs to be prioritized like that, या right? और उसमें भी they are my responsibility so long as they are also willing to put in the effort. या एक बंदा, if he's content with cussing me out every Instagram reel, boss, you need to take your own responsibility then, no? बिल्कुल, So बिल्कुल। I think वही वाली बात है कि it's not just we don't take responsibility, we also take the wrong या responsibilities. But speaking of responsibilities, इस पे आई वुड लाइक टू ऐड Yeah. कि दिस डज नॉट मीन, मतलब एक तरीके से ना ये सर्कम नेविगेशन भी है कि इट्स नॉट ऑलवेज अ डायरेक्ट पाथ टू वट एवर योर आर्टिस्टिक गोल्स आर, ठीक है। Absolutely. तो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने जो मेरे इनिशियल क्रिएटिव विजन्स थे या एस्पिरेशंस थी उनको मैंने अबैंडन कर दिया। I realize now there's a smarter way to go about it. You know, I could have kept hacking away at what I was doing and be like, yeah, eventually, matlab, you could make a case for it. कि eventually you will get there. But there is perhaps a smarter way to get there, and that is जो कि मैं आजकल currently जो मैं कर रहा हूँ, और वो ये है कि ये चीज़ मुझे दो लोगों ने सेपरेट इंस्टेंसेस पे सिखाई। एक अली गुल पीर ने, उसने कहा कि अपनी बात करो लेकिन आवाम की ज़बान में, ठीक है। एंड देन आई हैव दिस फ्रेंड हु टीचेस इम्प्रोव इन at the Johns Hopkins
यूनिवर्सिटी। तो उसने मुझे बताया कि यार तुम देखो अक्सर क्या होता है, ये बहुत बड़ी-बड़ी जो फ़िल्में होती हैं व्हिच आर अबाउट एक्सट्रीमली हेवी थिंग्स, if you watch their trailer, the trailer does not touch upon these topics of, let's say, systemic racism or gentrification or whatever जो अमेरिका के मसले हैं। वो हमेशा ऐसा एक ट्रेलर होगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप और मैं जो उस ट्रेलर को देख रहे हैं, हम सिनेमा में टिकट लेके उस मूवी को देखने जाएं। So both of these pieces of advice were very powerful for me कि यार मैं अपनी बात कर सकता हूँ लेकिन एक ऐसी ज़बान में अगर करूँ उसमें हर्ज क्या है, जब सबको अगर समझ में आ रही है क्लियरली, यू नो, इफ़ आई थिंक अबाउट इट एज अ बिजनेस, आई वांट टू मेक श्योर माय प्रोडक्ट इज एक्सेसिबल टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, राइट? Yes. तो Yes. इन दैट रिगार्ड आई फील लाइक कि ये चीज़ मुझे बड़ी समझ में आई, अकम्प्लिश हुई और सक्सेसफुल भी हुई। Alhamdulillah. अब इसका जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फाइनल गोल समझ लें, इवन दो नाउ आई डोंट बिलीव इन दैट Yeah. एनीमोर, लेकिन Yeah. एक तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए है कि, और इस साल का समझ लें एक हैवी न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी था कि पाकिस्तान में जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसको इंडिया के लेवल तक लाना है। और वो जाहिर सी बात है एक साल में तो नहीं होगा, नहीं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको अकम्प्लिश करने में जो स्टेप्स लेने हैं वो शुरू हो गए। तो सबसे पहले एक मसला था कि जी डिफेंस क्लिफ्टन में ही हो रही थी कॉमेडी, ठीक है, और एक ही 2-3 वेन्यू है, मैट स्कूल था, क्लब 432 था, वहाँ पे एक बड़ी मखसूस किस्म की ऑडियंस आ रही थी, ठीक है। अब होता क्या है, कॉमेडी का जो प्रोसेस है, मैं एक जोक लिखता हूँ, मैं एक दफ़ा ट्राई करूँगा आपके सामने, आपको समझ में नहीं आया, डजेंट मैटर, ओपन माइक नाइट थी, उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने जाके देखा, सो ऑन सो फोर्थ। एक ही जब वेन्यू में कर रहे थे, सेम पीपल वर शोइंग अप, आपने एक दफ़ा देख लिया, 2 दफ़ा देख लिया, आपकी हट जाएगी कि यार मैंने 1000 रुपये दिए, ये क्या बात हुई। डिजिटल फॉलोइंग की वजह से हुआ ये कि मुख्तलिफ अदर एरियाज ऑफ कराची ओपनड अप, सो देन वी वर एबल टू डू 4 ओपन माइक्स, जमजमा, टीपू सुल्तान, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद। That's fantastic. Yeah. उसी टाइम पे हम आपके पास हैदराबाद भी आए थे, ठीक है। Yeah. You did और Hyderabad as well. Yes. and I have very fond memories of that, especially that show and the dinner after at your restaurant. I think just to tag on to what we were talking about earlier, that's a very rewarding aspect of it. अपने आप करीबी दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं after the show. After the show, hanging out, हाँ, it's just और bliss. यूजुअली हर किसी शहर में, कोइंसिडेंटली आप उस वक्त हैदराबाद में थे, किसी ना किसी शहर में कोई अच्छा दोस्त कहीं ना कहीं होता ही है। Alhamdulillah. Yeah. तो आफ्टर अ शो दिस इज जस्ट, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग, फील वेरी ग्रेटफुल व्हेनेवर दिस हैपेंस। एंड Would you argue this is what you do it for? नहीं, आई विल नॉट आर्ग्यू दैट इट Okay. इज के जस्ट बीइंग अ comedian is just rewarding in itself, like any other job. But anyway, तो हैदराबाद भी was only possible because me, all of the other boys, हम सब ने डिजिटल फॉलोइंग एक कल्टिवेट की है। ये हो गया, हमने वो 4 जो शोज किए थे उसमें क्या हुआ, 4 इटरेशंस ऑफ द सेम जोक, रिवाइज्ड, रिव्यूड, इम्प्रूव्ड अपॉन इन एवरी इटरेशन, एंड देन एक फाइनल शो केस जिसको हमने टिकट सेल्स से जो पैसा आया उसको इन्वेस्ट किया और उसको प्रॉपरली हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। रिकॉर्ड किया आबिद रिजवी ने, जो कि यंगस्टर्स की लास्ट जो वीडियो थी, पता नहीं क्या नाम था उस गाने का, वो बनाई। तो हाँ, मतलब एक हाँ। बंदा जिसका लेवल है, ये नहीं कि कोई हल्की मोबाइल से। हाँ. तो वो अब वीडियोस आपने भी देखी, वो आ गई हैं। अब उसमें एक मैं चीज़ यहाँ कहना भी चाहूँगा कि ऑडियंस बहुत जल्दी ना जज करती है कि यार ये तो फ़नी नहीं है, ये नहीं है। अरे यार पहली दफ़ा है, इट्स नॉट एज सिंपल एज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड डूइंग दोज जोक्स, इट इज़ नॉट, No. इट इज़ इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड। व्हेन आई एम डूइंग दैट शो, आई एम नॉट जस्ट अ कमेडियन देयर, वो पूरा शो मैं होस्ट कर रहा हूँ, कैमरा क्रू, प्रोडक्शन, सबसे डील करना, ऑडियंस को ऐसे बिठाना कि यार कैमरे के सामने कोई आए कोई ना आए, देयर सो मैनी मूविंग पार्ट्स के अनफॉर्चुनेटली सिंस आई एम लीडिंग ऑल ऑफ दिस, मैं सिर्फ अपनी कॉमेडी पे अनफॉर्चुनेटली नहीं फोकस कर पाता, बट दैट इज अ सैक्रिफाइस आई एम विलिंग टू मेक इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स। One also hopes that because of how talented some of these videographers are, one also hopes that eventually and very very soon, inshallah, आप देखोगे, they'll also pick it up and then this will not be a concern. This is a logistical concern. हाँ, ये sort हो बट जाएगा. मैं इन नो वे डू आई मीन टू इम्प्लाई कि उनकी तरफ से कोई कमी थी। जो हमारी कमियां थी वो उनके अपने प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से,
लाइक पता नहीं, आप तो खैर इस फील्ड के आदमी हैं, यू कैन सी व्हाट अ वंडरफुल जॉब आबिद हैज डन तो फॉर समबडी हुज। आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बता रहे हो तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ अच्छा यू वर नहीं नहीं, स्ट्रेस्ड वीडियो में आल्सो। तो कोई मसला नहीं हाँ था, बट वही जब प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट ऑल हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसी चीज़ हम में से किसी ने ना तो की है ना पाकिस्तान में कभी हुई है, नहीं कि एक ओपन माइक के प्रोसेस के थ्रू वो सारे जोक्स गए, फिर एक ऑडियंस इकट्ठी हुई, वही जो पैसे, कोई स्पॉन्सर नहीं, उसमें लगे जाके फेवर्स लिए बहुत सारे, ये वो, तो ये हो गया, ठीक है, ये हमने कर लिया। इसका अब सेकंड स्पेल होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से। पहले हमने 4 शोज किए थे, अब हमने 6 करने अक्रॉस डिफरेंट, वो अभी हम एक मलीर में भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ओह वाओ these different areas of Karachi have opened up because of this digital following. So वही जो मैं एक सर्कम नेविगेशन की बात कर रहा था, नॉट अ स्ट्रेट पाथ बट एक इनडायरेक्ट पाथ, बट उसके थ्रू आपका इनिशियल गोल अकम्प्लिश हो रहा है। इससे पहले साथ ही साथ हमने लास्ट मंथ 5 शहर हमने किए पंजाब में और KPK में। सो वी डिड मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एंड हाउ वाज दोस? एंड इट वाज इनक्रेडिबल यार। लाहौर इस्लामाबाद में तो करते रहते हैं, बट द अदर 3 सिटीज यहाँ पे पहली दफ़ा स्टैंड अप कॉमेडी शो हो रहा था। सो दिस ईयर अलोन वी मैनेज टू डू 4 सिटीज जहाँ पे पहले कभी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हुई, एंड अगेन दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो हमारी फॉलोइंग है सबकी। एंड यही कोशिश है कि बस इसको करते रहेंगे। और वीडियोस डालना पहले इतना शायद ज़रूरी नहीं समझते थे, बट अब है कि यार वेन्यू जितना भी बड़ा हो, 100-200 लोग देख लेंगे, वीडियो डालेंगे इमीडिएटली It's हज़ारों में। hundreds of thousands. Yeah. Yeah, I think Akbar bhai, ek aur something else that's immensely powerful with the social medias, na, it is the fact that it allows you to produce various iterations of your work. So, what is the skill of a comedian? The skill of a comedian is speaking. Your language and your ability to articulate in a certain way, not in the best way according to some people, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे, but in a way that is palatable to certain people that would pay to watch it. बिल्कुल That is your बिल्कुल। skill, right? अगर एक full zero in focus किया जाए. Now with the social medias, there's at least 3 things that come readily to mind. आप reels बना लो, आप YouTube videos बना लो, आप podcast कर लो. ये 3 चीजें alone will give those people versions of exactly that, and that's why you'll see बाहर the most successful, not some of them, the most successful podcasters are comedians. बिल्कुल Because बिल्कुल। वो जो मसल है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, वो कहीं डेवलप होगा ना. It's just, and वही हम we were also, I don't want to bring this up also, but maybe we'll get into it later. अभी एक अच्छे tangent पे हम चल रहे हैं, but hecklers का जो सारा सीन होता है, ये कहा जाता है वहाँ की अमेरिकन कॉमेडी कॉमिक फर्टर्निटी में तो ये कहा जाता है कि द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज गेट इनटू अ मैच, अ स्पीकिंग मैच विद समवन हू डज इट फॉर अ लिविंग. Exactly. That's essentially what you do, is Yeah. you speak for a living, right? And so tell me that actually, what have your experiences with hecklers been like as of late, या पहले कैसा यार होता था? पहले होता था, जाहिर सी बात है, पहले आई वॉज अ नोबडी। जनरली जब मैं जाता था कहीं परफॉर्म करने, तो इट वाज लाइक अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन के यार यहाँ पे कॉमेडी होगी या यहाँ पे अकबर चौधरी आ रहा है, हाँ माशाल्लाह एक से, फ़र्क है उसमें। या तो पहले जब मुझे कोई जानता नहीं था, मैं इतना अच्छा भी नहीं था कमेडियन, आई हैड नॉट पुट इन दैट सॉर्ट ऑफ, मतलब उतना टाइम मुझे नहीं हुआ था करने में, तो जाहिर है वो स्किल्स भी नहीं अवेलेबल थे। सो बैक देन आई वुड गेट टोन डाउन क्वाइट बैडली इनफैक्ट। तो वो था, एंड देन इवेंचुअली लाइक विद एनी क्राफ्ट यू गेट बेटर एंड बेटर एट इट। नाउ अनफॉर्चुनेटली इतना होता नहीं है, नाउ आई फील लाइक आई हैव द स्किल्स टू हैंडल हैकलर्स। अब कोई हैकल करता नहीं है, now you're hoping, you're like I wish you would. क्योंकि वो है कि यार अब इसको देखने जा रहे हैं, और दूसरा ये भी होता है कि जिसने अगर वीडियोस वगैरह देखी हुई है इस तरह की चीज़, तो एक खौफ भी होता है कि यार हमारी ना ले लेना। अब इनफैक्ट लोग ये भी कहते हैं, ये जो आगे जो नहीं बैठते लोग फर्स्ट रो में, कि यार हम आगे बैठ रहे हैं, हमारी मत ले लेना। तो हम लाइक नहीं यार, इट्स एंड इट्स जस्ट बाय द वे interacting with an audience member, it's never about, for me at least, it's never about insulting them. No, it's not malicious. No. And zero malicious intention behind it. It's just having a good time, and I make sure I'm very respectful about it. I think ये भी एक बात है ना कि if you show up to a comedy show to get offended, I mean you're at the wrong place, boss. There's a lot of things you could do with this time of yours. बिल्कुल बिल्कुल। Okay,
I know Karachi has a special place in your heart, right? ये मैं निकल नहीं जाए सवाल ये उड़ता हुआ आ रहा है. What was the best city to perform in? I know Karachi is your favorite, लेकिन फिर भी एक बात बोल रहा हूँ. यार काजी भाई, I struggle with binaries. Okay. First top 5, top 10. I'll tell you different things about different Okay, cities. do that. That's ठीक है? better. Yeah. लाहौर में जो क्राउड है, लाहौर में आई फील लाइक खुल के ज़्यादा हंसते हैं. ठीक है? एंड देयर एपेटाइट फॉर वल्गैरिटी इज हायर. But higher vulgarity and no shame with their laughter. हाँ. Very interesting. So that is always from a comedian's point of view. These are two very welcome aspects, right? Yeah. I'll tell you an incident. I was telling somebody recently. मुझे याद आया ये. Somebody asked me what's the craziest thing that has happened at your show. Okay. ठीक है? So again, I struggle with specific instances. ये मुझे याद आया. दो तरह के शो हम करते हैं. एक तो होता है फैमिली फ्रेंडली क्लीन कॉमेडी, एक होता है डर्टी शो. डर्टी शो पे हमेशा बहुत सारे लोग आने की शौक रखते हैं. So one of these times, I was doing a dirty show in Lahore, and one of my jokes in the dirty show is like, I asked the crowd, how many of you have been caught watching porn? ठीक है? Generally at a show in Karachi, nobody is going to respond to that. ठीक है? अच्छा, nobody responds to it. Okay. Because जाहिर सी बात है, who wants to out themselves to a comedian. Yeah. Who wants to feel shame in front of, hundreds of people. So generally there is no response, and I reply with, okay, it's just me then. So that goes over well. Lahore mein, a lady of all people holds her hand up and she says, "Ke this one time my mom was out of the house and I was in the lounge watching Pornhub or something like that. And I was taking care of myself when suddenly my mom comes home." यार, this is so this is just incredible. मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे वो बड़ी अच्छी तरीके से याद है वो मोमेंट. तो so that was one of the very This is interesting so things powerful. about. It tells you so much about the culture that there's no shame, मतलब no shame attached to their happiness. Essentially, laughter is what happiness. There's no reservation. हाँ मैं खुश हूँ. Yeah, right? Exactly. मतलब again, this is just one person. Of course. But generally, appetite for vulgarity in Lahore is higher. Okay. इस्लामाबाद में बड़ा एक साफ सुथरा, एक पढ़ा लिखा क्राउड आता है. तो उनके साथ ये है कि अगर आपकी कोई इंटेलेक्चुअल ह्यूमर है, विटी बातें हैं, कुछ मुश्किल बातें हैं, वो शायद उनको थोड़ी समझ में आ जाए. एट द सेम टाइम वहाँ पे थोड़ा ना प्रिटेंशियस क्राउड भी आता है, तो वो खुल के नहीं हंसते बिकॉज दे फियर जजमेंट, बिकॉज एवरीबडी इन इस्लामाबाद अपेरेंटली नोज एवरीबडी एल्स. तो दे लाइक, यार अगर मैं इस पे हंसूँ, मुझे काजी जानता है, वो क्या सोचेगा. तो ऐसा भी हुआ है शो के बाद, मुझे लोग बता रहे हैं, यार आपका बड़ा अच्छा था, बस हम हंसे नहीं क्योंकि हमें था कि यार वो ना जज करे. कहा यार ये तो बड़ी अजीब मेंटेलिटी है. सही है. But then, interestingly, like I told you, 4 shows, first time in these cities. You joined us late in the show at Hyderabad. What happened was, शुरू में बड़ा ना स्लो चल रहा था और हमें लग रहा था शो अच्छा नहीं जा रहा. But turns out what was happening was, I think we sold out that show. 100 or 120 people there at NIC Hyderabad. Yes. Very, very nice people, by the way. Alhamdulillah. They gave us the venue free of cost. तो हंस नहीं रहे या खुल के नहीं हंस रहे शुरू में लोग, but eventually it just grew exponentially, their response. So we understood then कि उनको शुरू में टाइम लग रहा था समझने में कि इनके सामने हो क्या रहा है. बिकॉज हम तो आई गेस उसकी कुछ इफेक्ट भी कहते हैं ना, मतलब वी आर सो फार डिटैच फ्रॉम दिस ऑडियंस एक्सपीरियंस. हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड है ना कि भाई कॉमेडी शो तो होता है, यही होता है. को बोलते हैं proximity bias. Exactly. It's a proximity bias because you're like, dude, if you respond the way a Club 432 crowd responds, that is comedy, right? Exactly. So my comedy works. And if you don't respond like that, तो फिर what's going on? Are you not liking it? But they were, everyone was howling. People were responding to you. You people worked some people in the crowd. It was fantastic. Exactly. So this is exactly what happened in Multan and Faisalabad and Peshawar as well. It just took them a while to sort of internalize and absorb what's going on, and then coming on board completely. तो ये था. और दूसरी चीज़, just the hospitality of the people in Multan and Faisalabad and Peshawar. Matlab, these shows were unlike any shows we've done
बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल, यहाँ पे तो फिर भी ये है ना कि यार आप मुझे अगर नहीं भी जानते, आपके कोई दोस्त ने कहीं देखा है यार काजी वो शो हो रहा है, चलते चलते हैं, हैं, हाँ. तो यू डोंट नेसेसरली फॉलो मी या फॉलो उस्मान मजहर या अली अब्दुल्ला और you're a fan, you're हाँ. just like हाँ sounds like a good हाँ, time, he's चलते a हैं. comedian. This is Exactly. comedian. This is a show, and I'm going to enjoy myself. Yeah. Exactly. Yeah. Whereas in these four cities, these are people who are fans. नाम देख के आए थे. हाँ, इनको पता लगा है सोशल मीडिया से, इनको एग्जैक्टली पता है ये लोग कौन हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था कि यार इनको तो हम फोन पे देखते थे, ये तो हमारे सामने खड़े हैं, तो उनके लिए एक तरह से स्पेशल भी था ये, एंड उन्होंने हमें वो फील करवाया. We felt very special in all of these places. That's fantastic. That's so nice. हाँ हाँ, That's so I'm good. just telling you man, ये जो मोहब्बत मिलती है ना, ये this is the reason why people who get famous go crazy. Yeah, sure, dude. Because you're not supposed to get this much love. Exactly. Like, you know what I mean? You're Nobody supposed is. to, yeah. Nobody is. You're supposed to get the love of your family. तो मुझे समझ में आता है फिर कि ये दिमाग जो खराब हो जाते हैं ना मशहूर लोगों के, ये है इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है. It's just ridiculous, man. वो जो नहीं है फिर, because वही वाली बात है ना कि you'll see some comedians and they'll start asking for they'll have very strange requests. अगर एवियन का पानी नहीं, they're not comedians, sorry, celebrities. अगर एवियन का पानी नहीं मिला तो मैं perform नहीं करूँगा. And then you're like, why? They're like, because they're trying to process, like, I think some of it is just them trying to push it. क्या एक बात सुनो, you can't love me this much. What the fuck are you talking about, right? So let's see. Okay. You're saying, okay, 500 people out there all paid 5,000 rupees a piece just to be here, listen to me sing 4 songs that they could listen to on Spotify. बिल्कुल. Yes. Acha. Let's see what else I can get. I want a white monster. Can I get a white monster? They're like, absolutely. What else do you want? What the fuck is going on? You know what I mean? तो unnatural है, I feel like. Yeah. It's not. I think one of the more fun things. Obviously, I've been to a lot of your performances. One of the more fun things I had was we did a live podcast. You and I, we वो Club Manhattan पे किया था. बिल्कुल Manhattan Express. 50-60 लोग आए थे, पता नहीं कितने. Manhattan Express, sorry. 50-60 लोग आए थे, पता नहीं कितने आए थे. But just sharing the stage with you, it felt like, because I don't like being on stage, right? Do you like it? Is it something that can ever with practice become okay? क्या scene होता है being on stage? Like, how do you approach it? And what is आपके क्या तासुरात होते हैं about being on stage in front of like 2, 3, 4, 500 लोग? How does that feel? यार गाजी भाई, like I told you 12 साल हो गए हैं और अभी भी हालत ख़राब होती है शो से पहले, ठीक है. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, आई थिंक, कि इट जस्ट मीन्स दैट यू केयर अबाउट द आउटकम, ठीक है. सो सर्टनली इट गेट्स ईजियर. सर्टनली सम प्लेसेज यूर लाइक, लेट्स से अभी कराची में एक पब्लिक शो है, ठीक है, हैबिट सिटी पे, जो कि है हमारा जी अभी आ रहा है नेक्स्ट वीकेंड. तो नहीं, कल परसों नहीं है वो बाकी बॉयज़ का दूसरा एक नौयत का शो है वो, बट वो भी है बिल्कुल. उस पर भी जाइएगा, बट उसके अगले हफ्ते भी है क्या. ओके. सो उसमें है एक तरह से, अगर एक लॉजिकल या रैशनल अप्रोच ली जाए, यू नो, देयर इज गोइंग टू बी लाइक 70-80 पीपल देयर इज पीपल हु लाइक अस, हु लाइक आवर कॉमेडी. सर्कमस्टेंसेस आर इन आवर फेवर, ठीक है, चांसेस आर दिस इज गोइंग टू गो वेल. तो एक तो ये होता है. Still, there's a lot of anxiety to varying degrees between all of the various comedians, and that just means you care about the outcome. You know, if you're not feeling anything, that just means कि it doesn't matter how it goes. इसका एक और लेवल होता है कॉर्पोरेट शोज में, या शोज जहाँ पे सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन योर फेवर. शादी पे परफॉर्म करना है, किसी और के इवेंट पे परफॉर्म करना है, कहीं और कुछ भी सर्कमस्टेंस ऐसा हो, तो देन दैट एंजाइटी मे बी डबल्स और ट्रिपल्स when the context is not in your favor. Yeah when the context is not in your but favor. I'm just trying to say कि even with everything in your favor, एक anxiety होती है before going up on stage, and the minute you hold that mic and utter your first words, it just goes away. अच्छा, ये नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ. I just वही है यार, it's just a matter of repetition. It's like any other skill. Do you at this point fancy yourself a mentor
to other younger comedians? Is that something, a role? Because this is something, a position that you occupy. You can't help it, really. But is it something you're comfortable with? Uh, I have a bunch of different thoughts about this. एक time था when I took this responsibility seriously, I would say, because ये एक reality है. There is a lack of mentorship within the stand-up comedy community because this space just hasn't, been developed. Yeah, we don't have the logistics. हमारे मुल्क में और कितने मसले हैं स्टैंड अप कॉमेडी को तवज्जो दी जाए. एनीवे, तो एक टाइम था कि मैं बड़े रेगुलरली ओपन माइक नाइट्स करवाता था. दीज वर ओपन टू एवरीबडी. Anybody just had to, who wanted to perform, they just had to message me and I would put them on the show. We even had people come from Hyderabad, a comedian who came on a bus, I think. और उसने आके सिर्फ 5 मिनट परफॉर्म करने के लिए इतनी एफर्ट की. That was just amazing to me. तो ये मैं रेगुलरली करवाता था. आई थिंक 2-3 साल मैंने अच्छी खासी ओपन माइक नाइट्स करवाई हैं. मैंने कॉमेडी कोर्सेज भी डेवलप किए थे एंड आई वुड क्या कहते हैं, टीच कॉमेडी लाइक थ्रू अ 6-week वर्कशॉप. यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाने की कोशिश की. बट देन मैंने ये फील किया कि इट इज़ टाइम टू पास द टॉर्च ऑन. सो नाउ आई वुडंट से कि मैं हर किसी के लिए खलीफा बनने के लिए तैयार हूँ. बट आई एम हैप्पी टू गिव एनीबडी एडवाइस हु आस्क्स. Okay, that makes sense. Um, how is the podcasting? Because you're doing the podcast with Yes. Ali, Kulpir, and Khizra. Yes. Fantastic, lots of fun. And I think, and here's the thing, I personally feel, as someone who does this, not saying I'm an expert or anything, but as someone who does this, कि अभी तक you people have not hit your stride. Because you're going to get comfortable with two things. A, comfortable with the recording of it. Two, get comfortable with the equipment. बिल्कुल. वो एक बहुत बड़ा मसला होता है. जैसे अभी भी ना, like we have to set up to speak into these mics. Exactly. Eventually, I think you guys are going to knock it out of the park, inshallah. What's that? Because that's long form, unrehearsed. Yes. How does that feel? How is that different? That's a lot of fun actually. There's something that happened. Ali Gulpir and I, we went to Serbia together. Yeah. I reeled him in. So during that time we had this discussion. यार ये करते हैं. And उस पे हम दोनों को थॉट ये था कि यार आप कर रहे हो पॉडकास्ट, जुनेद अकरम, मूरू, शहजाद करता है. Those guys do fantastic great work. podcast. Yeah, mashallah, sir. But all of these podcasts are serious. Yeah, depending on the nature of the guest. But generally एक डेडिकेटेड कॉमेडी पॉडकास्ट नहीं एग्जिस्ट करती. ठीक है. एंड मेरे माइंड में था एंड्रू शल्स का फ्लेग्रेंट. अली गुल के माइंड में क्या नाम है उसका, भूल रहा हूँ, अगेन नॉट गुड एट विद नेम्स. एनीवे, एक हमारे माइंड में था कि यार एक तो हो कि कॉमेडी पॉडकास्ट हो, और कॉमेडी पॉडकास्ट के साथ साथ ये भी विजन था कि गेस्ट सेंट्रिक ना हो, होस्ट सेंट्रिक हो. और साथ में एक ऐसा भी बंदा हो हु मेक्स अस not makes us, who is different from us. Okay. ठीक है. So Ali Gul and I and every other comedian तकरीबन are the best of friends. Khizra is somebody who was an acquaintance. So we wanted somebody who is unknown to us, who, for example, किसी और को हम रख लेते, अली अब्दुल्ला को रख लेते. हाँ, he's a friend. Essentially the same style of humor. Very comfortable with each other. एक ही तरह की बातें होंगी probably. We wanted that challenge to having also a female perspective, but also somebody who is not known to us. Super cool. So that I feel like has created an interesting dynamic. And like you said, haven't hit our stride yet. मेरे mind में तो है कि भाई 100 episode के बाद देखेंगे. हाँ, absolutely. So this is like a long term investment. And I think that's the best way. वही जो आपने हमने पहले भी बात की कि you just have to fall in love with running. Yeah. Once you fall in love with running, I would be very interested वैसे to see, क्योंकि अभी नादिर अली ने podcast शुरू किया. He's a comedian, right? मतलब some version of a comedian. ठीक है. And but वो भी serious नोयत का कर रहे हैं. I think is the problem. He's kind of venturing this way and you're going the other way. I'd be very interested to see Tabish Hasmi do a podcast. I don't understand why he hasn't. I suppose he's busy making all the money. He's busy making all the money. So he's not. But yeah, I think that's one person. If he could just, I think settle down, and because he's so fast now.
I would pay good sums of money to watch him do a podcast. But वही है ना, he doesn't need to. He just Why does would that he? show, Why would he? makes the big bucks. Makes But I think maybe eventually that might be something he would want to do. I think he'd be super interesting as a person to speak to. मैंने उनसे ऑनलाइन बात की, उन्होंने बोला कि जब आएंगे इंशाल्लाह he'd be down to come on. I'd be like, it'd be my pleasure, alhamdulillah, and inshallah. वो But तो आते भी इधर ही हैं. हाँ जी, वही तो मैंने हाँ, दूसरा देखें, पड़ोसी लगेंगे आपके. दूसरा हाथ तो मैंने यही से निकाला. हाँ, मैंने बोला जिस वक्त आप बोले. किस वक्त? सुबह के हाँ. 2 बजे, सुबह के 3 बजे, कोई मसला नहीं है. मैं मॉन्स्टर पीता हूँ, मसला नहीं है. But he's just like but I was just like as a person it'd be so because all of the stuff he does is super quick. Hmm. It's choppy, it's super quick. I think it'd be super interesting to see him relax, like just be like, okay, we're here, right? So I'll pull out the comedy when I need to or what have you, but we're here for now. Ah. You know, I think that'd be super I feel interesting. like there's something that's underappreciated about Tabish भाई के पता नहीं आपने देखा है नहीं, मैंने उनके साथ एक किया था मेंस डेन टाइप एक पॉडकास्ट. Yeah, sure. नहीं, बट समवेयर बिटवीन अ टॉक शो एंड अ पॉडकास्ट. तो उनसे उसमें मैं कहा यार कॉमेडी के लिए तो हर कोई जानता है ताबिश भाई को, लेट्स ट्राई एंड डिग डीपर. तो he he's just a very smart guy. He's intelligent. He's a very intelligent person. He has a breadth of experience, well traveled, well read, बहुत multifaceted. तो कॉमेडी समथिंग ही कैन जस्ट डू एफर्टलेसली. वो बैठ के आपको जब भी आप करेंगे हंसाते रहेंगे 1 घंटा अगर आप चाहें, या फिर हैवी बातें भी कर लेंगे. तो या मतलब वो एक ऐसे इंसान है जो कि वो नहीं होता एक्सेप्शन टू द रूल वाले बंदे होते हैं. Sure. तो एवरीबडी एल्स यू कांट कंपेयर टू हिम. ही इज लाइक द गोल्ड स्टैंडर्ड. आप बाकी कॉमेडियंस को एक दूसरे से करें कंपेयर, ताबिश भाई से ना करें. नोबडी कैन, आई डोंट थिंक, in the foreseeable future get where he has gone to. That's saying something. Coming from you, that's high praise. इसमें bias भी है because he's a dear friend and I am very fond of him. But I was a fan of his before I became a friend of his. So this is also my professional opinion. Yeah. I don't feel the need to disagree with you. Yeah. There. Are there underground comedians coming in? What is the underground scene like? Are you happy with it? Oh, yes. Yeah. I think I could name maybe 10 or 15 new comedians who perhaps you've not heard of. And these are comedians who are killing it. They are, I feel, at par with their Indian counterparts. And Natalia Gul has been slaving away, doing a phenomenal job with the open mic nights. Instrumental. She's been instrumental. She's organizing with the Jungle PK. जिसको नहीं पता आप Instagram पे देखें, the Jungle को आपको perform करने का मौका भी मिलेगा. But just the work she's doing, and since I've been in that position, I feel I think very highly of her because it's a thankless job. It's yes. There's no absolutely. money. There is no, मतलब आपकी कोई ऑडियंस वाह नहीं कर रही, ठीक है. इट्स जस्ट administrative work. Yeah. And you're giving a platform. So it's a very selfless endeavor what she's doing. And because of that, there are these 10-15 people who inshallah will become the next, maybe not Tabish Hasmi, but somewhere close. Really? Yeah. Really? मुझे अगर आप नाम बता भी दोगे, when are they performing next? Where can we see them? On the Jungle PK. आज ही कर रहे होंगे. आज फ्राइडे है ना, बट चले नेक्स्ट फ्राइडे. पता नहीं कहाँ हो रहा है अब नेक्स्ट. हार्ली कुछ कैफे बताया था नतालिया ने. Just follow. I think that just follow the Jungle PK and you will find that 15, 10 to 15. Oh, very exciting. Tell me about your ये जो आपने फाइनेंशियल बोला कि पैसे सेटल हो गए. How did you go about doing that? Because do you understand? अब ज़ाहिर I know you शुरू में आपने specify कर दिया कि you're not anything. This is just your work, right? But do you consider yourself a content creator? Because you do create content online in that very typical sense कि आप वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो डालते हैं, फिर उस पे व्यूज आते हैं, फिर उससे भी आपका एक तरीके से बिल्कुल that is, I would say, the lion's share of where my income comes from. I guess I do. मतलब I feel like, again, I'm not too big on labels and identities and whatnot, but वही है कि I
feel like I consider myself a comedian, and there are various avenues through which I can relay my comedic expression. And YouTube, Facebook, Instagram is one of those channels. But live performance is primarily where I derive the most joy from. If you were to give me a choice, You would pick that. I would always pick that. Always you'd Yeah. pick that. Interesting. But when these young kids come up, right? And obviously no one has, I don't think anyone has the kind of wealth where they're just like, nahin, I'm just going to keep doing it. And eventually when I get good, I get good. What advice do you give them for monetization? Like, wo kaise paise kamaye? But they're not you. They're not Tabish Hasmi. They're not Ali Gul. They're not any of you guys. So how do they start making money immediately? Do they go towards content creation? Yes, 100%. I think in this day and age, it is unfortunately no longer enough to just be a comedian who performs live. If you want to make money, अगर आप अपने शौक के लिए कर रहे हैं फिर तो सही है, कोई मसला नहीं. लेकिन अगर आपने इसको एक पेशा बनाना है, if this is something you want to sustain yourself, your family off, then it is imperative to get into the digital world ASAP and to create a format, um, basically a format that is sustainable, a comedic format. What I mean by that is, आप मेरी वीडियोस देख लें. मेरा फॉर्मेट सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में रोज़ाना अजीब आइटम हो रहे होते हैं. ठीक है, आई जस्ट बेसिकली कलेक्ट दैट एंड मेक अ नैरेटिव आउट ऑफ इट. अली गुल पीर का फॉर्मेट इसलिए सस्टेनेबल है, अगेन अजीब आइटम हो रहे होते हैं एंड ही डज अ रिक्रिएशन ऑफ देम. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म. दीज आर नॉट वन ऑफ एंडेवर्स. आप और किसका देख सकते हैं? Technically, you could even see Duckies, वैसे. डकी Technically. भाई का बिल्कुल, he has an interesting life, he Yeah. documents all of that. Yeah, वो तो now ना, पर उससे पहले जो वो basically roast करते थे ना लोगों को. And I don't know if roasting is the best thing you could do, but as a comedian, you could definitely बिल्कुल interact with, you know. The point is कि there should be some longevity behind the format. You don't have to know exactly what your format is from the first day. ठीक है, this is I feel like इसका भी कोई वर्ड होता है, जैसे आपने अच्छी सी proximity bias बनाया था ना. हम डे 1 से डे 1000 का सोच रहे होते हैं. It's not necessary. You I just think start. one of the things that would happen is a confirmation bias. कि यार अकबर चौधरी ने बोला था कि रैंटी रोने टाइप कुछ बनाना है. Confirmation bias. Whatever brings me closer to that kind of content is what I should make. No, you should make something that also speaks to you. इसमें मसला भी नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपने मुझे छापना है, जैसे I'm sure about you know a lot more about writing than I do. But one of the things that exercises about writing is कि you copyright your favorite authors. जो भी उनके works हैं उनको by hand as it is लिखें. And in doing that you will develop your own voice या whatever. Similarly, आपको अगर लगता है कि अली गुल पीर का फॉर्मेट छापना है, मेरा छापना है, आप छापें, बिल्कुल करें. बट आप करें, start and be diligent and be consistent, and in doing that you will eventually figure out what your thing is. Very recently मैं कोनन का podcast सुन रहा था. कोनन ओब्रायन is the epitome of comedy in my worldview. But he said कि all of these लेट नाइट शोज का जब कल्चर था, इट स्टार्टेड ऑफ विद एक बंदा था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, बट देन देयर वाज जॉनी कार्सन हु वाज द मोस्ट फेमस लेट नाइट डेविड होस्ट. लेटरमैन था ऐसे ना. डेविड लेटरमैन, फिर कोनन. सो व्हाट ही सेड वाज कि दीज गाइज, जैसे लेटरमैन स्टार्टेड ऑफ ट्राइंग टू बिकम जॉनी कार्सन, कोनन ट्राइड टू बिकम लेटरमैन, बट इन फेलिंग टू डू सो दे बिकेम हु दे आर. You see, that's just such an amazing thing to perspective in my opinion. तो it doesn't matter कि आप इसको कर रहे हैं, इससे derive कर रहे हैं inspiration, उसका format जैसा है, ये वो doesn't matter. आप बस करें, and in that process, वही journey वाली जो हम बात कर रहे थे, you will figure out who you are. कोहली बनते बनते बाबर बन गया. Exactly. जॉर्डन बनते बनते कोबी बन गया. ऐसे होता है ना. बिल्कुल. और शोएब अख्तर, I think वसीम अकरम बनते बनते वो शोएब अख्तर बन गया. You know? It's actually क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात की आपने कि हमारे जो ये चाइल्डहुड हीरोज थे, हम जब क्रिकेट खेलते थे हम सब तो यही करना चाह रहे होते, यार मैं शोएब अख्तर वाली फास्ट बॉलिंग या मैं अफरीदी की तरह. और हम जितने आज के प्लेयर्स हैं यकीनन वो भी यही कर रहे होंगे. और वो बाबर बन गए फिर. Imagine Babar Azam is 2 years younger than me. Yeah. And a fantastic representation. So brilliant, I think.
So you think there's nothing wrong with people copying people? Why do you think? आपने अपनी एक अभी रिसेंटली रील में या स्टोरी में बात की थी कि यू कैन टेल देयर इज अ malicious intention behind it or not. Can I? मैंने नहीं कब? आपने कुछ इस तरह की बात की थी ना, आप मेरी रील पे कुछ बना रहे हैं या हाँ. कुछ कर रहे हैं तो आप करें, ज़रूर करें. हाँ, पॉडकास्ट के बारे में. हाँ, पॉडकास्ट के बारे में. पॉडकास्ट हाँ, बिल्कुल. so because this is long form ना, या people will take excerpts क्लिप्स from. ले रहे थे, हाँ, बिल्कुल people will बिल्कुल. take excerpts and my. एसेंशियली Yeah. वही चीज़ यू कैन टेल. कोई बंदा आपको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की वजह से कर रहा है या कोई बंदा कर ही इसलिए रहा है कि बस इसको छाप के मैं जल्दी से कुछ पैसा कमा लूँ, वो बड़ा क्लियर हो जाता है. एंड इन द लॉन्ग रन पीपल हु जस्ट स्टार्ट ऑफ नीडिंग सम इंस्पिरेशन आर द वंस हु सक्सीड. What do you say about people who have that one viral, like ठीक है, maybe we understand virality differently, but one super viral piece of content and they're just huge, then Dananeer type party हो रही है and then फिर माशाल्लाह से 3 million on बिल्कुल, Instagram, बिल्कुल. right? What are your opinions about it, and should people try to emulate that in content creation? आई फील लाइक काजी भाई, मेरे ख्याल से तो दिस इज परहैप्स मोर अ कर्स देन अ बून, यू नो, बिकॉज आपकी पहली वीडियो पे ही 3 मिलियन आ गए, लेट्स से. ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये, ज़रूरी क्या, यकीनन अगली वीडियो पे नहीं आएंगे. सो देन एक टाइम पे ये भी चल रहा था ना, वो आई थिंक ये जुनैद अकरम की पॉडकास्ट में बात की थी, वो नहीं आयशा जो लड़की थी डांस जो जिसका वायरल हो गया था, मेरा दिल ये पुकारे आजा, और उस पर फिर कुछ पोस्ट आ गई थी कि ये 2 करोड़ कमा रही है 3 दिन में. ये पोस्ट सोल ब्रदर्स पे चल गई, वहाँ इंजीनियर लड़के डिप्रेस हो रहे हैं. अजीब सा एक सिचुएशन. एनीवे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के डजंट मैटर 3 मिलियन आ गए, वो रहेंगे इसीलिए रहेंगे ना अगर आप बाद में भी कुछ अच्छा दे रहे हो. अगर आप बेकार बातें कर रहे हो या फजूल कंटेंट बना रहे हो, वो तो चले जाएंगे. बिकॉज इन दिस डे एंड एज लॉयल्टी, not like in a classical sense या not in any negative way, but there's so much to see. आप अगर अच्छा आइटम नहीं दे रहे, so there is no compulsion for the viewer to just stick to you. They'll find other stuff. So Dananeer, I feel like I've met her once. I actually think very highly about her. She was maybe 20 या पता नहीं क्या, far smarter than I was at that age. Of course. And ये बच्चे बहुत समझदार हैं माशाल्लाह ऐसा से. थोड़ी है कि उसने एक वो बनाई और उसके बाद वो बेकार आइटम में लग गई. शी वाज स्मार्ट अबाउट इट. शी इज आई थिंक डूइंग ड्रामास या फिल्म्स और That's व्हाटएवर. what she's doing. तो Yeah. उसके बाद भी तो मेहनत लगती है ना भाई. ऐसा थोड़ी है कि एक छक्का लगा उसके बाद बस आपकी लाइफ सेट है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Well, I think you're absolutely right in that. I think it's far more work than someone would initially give it credit for. I was telling you about hecklers, and I was asking you, in fact, about hecklers. और मैं आपने वही बात बोली ना कि when you're in the crowd, you're hidden in anonymity, right? And that's a coward's way of attacking. You might win. अगर लड़ाई लड़नी है और आप छुप के कहीं से वार करो, शायद आप जीत जाओ. But I mean, how do you feel about yourself after? You know, like this is how you plan on living life. आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो. So I think बिल्कुल it takes a lot of effort, and उससे ज़्यादा it takes a lot of bravery. She was making fun of an accent, of a party, or you know. Yeah. But she put herself out there. Yeah. And she chooses to do so consistently. I think अभी थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट हुई रज़ा भाई के साथ, या फिर और रज़ा भाई वाली पॉडकास्ट पे रोमैसा के बारे में बात हुई. स्पेशली वुमेन, अरी कहा कि इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल. इवन जन्नत मिर्जा, राइट, मोमिना मुनीर, all these fantastic women, right? They're putting themselves out there. I think it takes immense bravery. And I think, sure, they get rewarded for it immensely. I mean, 16 million followers, come on now. But at the same time, I think they're smarter than ये खूबसूरत लड़की और तभी लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, you know. Yeah, मैं speaking about this, on the invitation of Raza Bhai, I went to watch his movie, and I did not have, you know, matlab, I'm just generally skeptical about Pakistani films because in my experience they've never been particularly well done. No, So not particularly. I didn't have very high expectations, but he's a friend. I have been happy to support him. I was blown away by how incredibly well done that movie was. Yeah. It is, in my opinion, the best Pakistani film that has ever been made. And
रोमैसा खान जो है, आई डिडंट नो मच अबाउट हर, बट आई शायद टिकटॉकर थी या क्या थी, आई डोंट नो। हाँ टिकटॉक है। यार उन्होंने जो एक्टिंग की है उसमें, आपने देखी है ना मूवी? नहीं नहीं मैंने नहीं देखी? देखी है। ऑल दैट्स द प्रॉब्लम इज कि मुझे जाके देखनी है पर मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। तो जो है बट एवरीवन कीप्स सेइंग एग्जैक्टली दैट, लाइक कि पता Bro, you can't tell that this lady has not been acting her entire life. Like, just incredible. Raza Samu, of course, of course. incredible, But incredible. I said this to him, I was like I wasn't surprised. I Exactly. was not. I Of was course you've I been was acting, not yeah, surprised. I was surprised by Rumesa Khan. I was not surprised by Salim Miraj, because but in no way does that mean that he was not phenomenal. or He that you were not just impressed, you just weren't surprised. I was just blown away by the entire thing. Of course, Salim Miraj was my favorite. I just thought कि this is just मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ये बंदा, इतनी अच्छी एक्टिंग मुझे लगी. Again, these are my personal opinions. हाँ हाँ But जो भी देख सकता है जॉन फिल्म जरूर हाँ देखे. जॉन फिल्म बहुत देखे। मजा आया मुझे. What's so tell me this then, right? That is one of the routes that comedians take abroad, right? यहाँ पे जाहिर है ना वो इंडस्ट्री सेट वो सब चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है? Do you ever envision though that you might go into movies? Because Raza started with Tili ki उससे थोड़ा पहले शायद, पर Tili की series में भी he did quite a bit of work, right? Eventually, inshallah, Allah ke hukum se, once you develop enough of a celebrity, is that something you would ever consider going into? नहीं, I don't think so. Never Because ever. काजी भाई, like I told you, 2009 में जब शुरू किया था ना, तो थिएटर से शुरू किया था. And funny theater. तो alhamdulillah, I have sufficient self-awareness to know that I am not a good actor. So, and I generally do not enjoy doing things that I'm not good at. Okay. So, especially in front of Millions. yeah. ना ही मुझे एक्टिंग का कोई शौक है, लेकिन ये है कि अगर जैसे कोई जैसे इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल में रजा भाई थे, तो एक कॉमेडी एस्पेक्ट अगर कहीं ना कहीं हो और मुझे समझ में आ रहा हो तो आई वुड हैप्पीली डू इट. Yeah. लेकिन मुझे फिल्म स्टार बनने का कोई शौक नहीं है. नहीं. मुझे सिर्फ लाइव स्टैंड अप कॉमेडी करनी है फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. ना ही मुझे मशहूर होने का शौक है, ना ही मुझे नंबर्स में कोई इंटरेस्ट है. मुझे फेम वगैरह में कोई यूटिलिटी नहीं दिखती. आई नो दीज आर ईजी थिंग्स टू से, बट आई जेन्युइनली मीन देम. आई क्वाइट प्रेफर एनोनिमिटी. आई नॉट टू से कि आई डोंट, लाइक आई सेड, इतनी मोहब्बत जो मिलती है लोगों से बहुत अच्छी लगती है. Alhamdulillah. बट व्हेन आई गो अब्रॉड एंड आई एम just another person in a sea of people, I quite like that. I don't like being recognized या ओ वो ये देखो वो बैठा हुआ है. मुझे सिर्फ अपना काम करना है. That's that is super it. interesting. That's Yeah. that's And I'm powerful. not trying to sound holier than thou या pretentious या ungrateful. This is just मतलब ये मेरे अभी तक तजर्बे का निचोड़ है कि about the things that really matter. हाँ मैंने पूछा, आपने बताया, no you're not at all being any of those things, but it's super interesting because that's the antithesis of a content creator essentially. Like you want the big numbers for the big numbers to come in. Do you know, like हाँ, ठीक है. that to is लेकिन काजी भाई वो उस चीज को मैं इस तरह परसीव करता हूँ. द नंबर्स आर अ कॉन्सिक्वेंस of any excellence I pursue in my work. ठीक है? It is not the pursuit of the numbers. It is कि मैं काम अगर अच्छा करूँगा तो यकीनन नंबर्स भी आएंगे और पैसा भी आ जाएगा और आपके टर्म्स पे आएगा. हाँ एग्जैक्टली. That's powerful. ये नहीं है कि यार कुछ भी बना दिया. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्रेंड्स वगैरह चल रहे होते हैं, उस पर एक आध कुछ अजीब सी चीज़ कर दो आप तो वो वायरल हो जाएगी. मतलब एक तरह से कुछ चीज़ों में गारंटीज होती हैं कि यार ये चलेगा. बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई रियलाइज्ड इवेंचुअली. एक पॉइंट ज़रूर था कि आई वॉज चेसिंग नंबर्स और अभी भी मेरे को इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि मैं अपना काम चला सकता हूँ. बट एक पॉइंट था कि मैं यार उसमें पड़ गया था कि यार मेरे कितने हो गए. एंड देन आई वेरी क्विकली रियलाइज्ड कि यार द होल रीज़न आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वॉज दैट इट इज़ अ रैट रेस. ठीक है, हाउ इज़ दिस एनी डिफरेंट? It's not any different. वही चीज पे आपने एक अलग पैकेजिंग लगा दी तो same exact thing. It'd be disingenuous to fool myself, right? Yeah. It's the same thing. So then once that realization kicked in, I was like, नहीं यार ये सब तो करना ही नहीं है. जब
आई थिंक सुपर पावरफुल, मुझे इतनी बार सुपर पावरफुल इस्तेमाल कर लिया मैंने। आई थिंक ये मैंने जो है ना उस वक्त भी नोटिस किया कि आप ये नहीं करने वाले हो। When the short form content started blowing up, right? People like Hamza Bhatti started coming on the scene. Hamza Bhatti, yes, food content, but also उसका बोलने का अंदाज ऐसा है. And I was like, yeah, this is Akbar Chaudry could do this, right? And you remember, अगर आपको याद हो, I always kept telling you कि यार आप सिर्फ vertical में shoot करो और आप डालो तो सही, देखो तो क्या होता है. हाँ But that was just not something you were going to do because it's not something that you gravitate towards. You हाँ would हाँ rather do stand up, get that filmed, put that as a reel. yeah, You would exactly. rather prefer that. Again, it's easier to say in retrospect. अगर कुछ भी नहीं चल रहा होता हाँ, तो आप तो करते। चांसेस आर के उसमें आप पड़ जाते कि भाई बाकी सबका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा. अल्हम्दुलिल्लाह कॉमेडी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक चल रही है, पैसा आ रहा है, तो सही है. Where do you think the evolution needs to be now? For instance, जैसे अगर हम US में बेस करें, because comedy wise that is the hub of बिल्कुल, comedy. बिल्कुल. America is Yes. especially and कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप contemporary कॉमेडी stand का up, yes, comedy. लेकिन उनकी वो लोग ये पेश करते हैं, उनकी सफाई नहीं, उनकी वो वजूहत ये पेश करते हैं कि वहाँ पे कॉमेडी क्लब्स बहुत हैं. तो इवन इफ यूर लाइक अ स्मॉल टाइम कॉमिक, ये जो आपने 15 खवातीन और हजरात बताए, दे कुड एसेंशियली ये अपनी दिहाड़ी लगा सकते होते अगर बिल्कुल, कॉमेडी बिल्कुल, क्लब्स होते, बिल्कुल. राइट? But we don't have a single comedy club in all of Pakistan. This I can say without checking. We don't, Yeah, right? that is correct. How do you perceive that space? Do you ever imagine, because I mean that would be too much work, but do you ever imagine owning a space? Like, what's the situation Yes, there? yes, 100%. This Inshallah. is the eventual goal. Inshallah. Fingers crossed. Allah करेगा inshallah. Within the next few years, ये हो जाना चाहिए. Allah के हुक्म से. That's And, fantastic, dude. This will be liberating in a lot of ways, because right now what happens is ke, there's a difference between a show that is done in a comedy club and in a space which is being repurposed for a comedy show. You Yes. see? Yes. So, for example, Yeah, explain that difference, हाँ. क्योंकि मुझे पता है लेकिन लोगों को शायद ना पता हो. फॉर एग्जाम्पल हम जैसे किसी हमने ऑफ लेट ये NICs में बहुत शो किए हैं, ठीक है. Those are super nice spaces. Incredible people, incredible places, the most hospitable. NIC हैदराबाद, कराची, NIC पेशावर, हमारा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, हमें पूरी सहूलत दी, हमसे कोई पैसे नहीं लिए, तो इससे बेहतर डील हो नहीं सकती. However, it is not a comedy club. Therefore, कॉमेडी क्लब में जनरली क्या होता है कि जो हॉल्स हैं वो छोटे शो के लिए अलग होते हैं, बड़े शो के लिए अलग होते हैं. रिगार्डलेस उनमें एक स्टेज मौजूद होता है और उनकी सीलिंग्स लो होती हैं और पूरी एक ऐसी वाइब क्रिएट होती है कि एक इंटीमेट वेन्यू है ये, ठीक है. एंड व्हेन ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर कॉमेडी टू वर्क, एंड यू विल सी इट डज, ठीक है. Places which have been repurposed will either they will not have a stage or their ceilings will be too high. When the ceiling is too high, energy tends to dissipate, because it's very it's very contagious. जब जितनी छोटी space में लोग हंसे जा रहे हैं, so then it just sort of goes on a roll. The lighting will be different. In a comedy club, it's dark where the audience is, and there's warm light on the stage, bright. बहुत सारी जगहों पे वाइट लाइट होती है, वो अलग होता है, ठीक है. साउंड सिस्टम कॉमेडी क्लब का जब छोटी जगह होती है, बड़ा एक बूमिंग किस्म की क्लियर आवाज़ होती है विद अ हायर सीलिंग. ऑब्वियसली देयर इज मोर डिसिपेशन, मोर echoing एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये फ़र्क है. I think that's exciting. I think just the confidence with which you said ना कि ये तो करना है इंशाल्लाह. And I think इस पे मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा यार, आई फील लाइक मैंने बहुत चबाया आपको, बट नहीं मुझे अच्छा भी लग रहा है ये बातें करते हुए, क्योंकि कहीं और की नहीं है मैंने. प्लीज. बट ये चीज़ मैं इनकरेज भी करूँगा लोगों को, और ख़ुद भी इसको मैं इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करता हूँ. यार विक्टिम माइंडसेट में रह जाते हैं हम बहुत सारे लोग. 200%. यस. तो ये चीज़ भी कुछ टाइम लगा समझने में. अगेन मैं कोई यंग आदमी नहीं हूँ, मैंने भी बहुत ठोकरें खाई हैं. आई हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल. माशाल्लाह से. तो I could just as easily have responded to your previous question by saying, यार पाकिस्तान जैसा मुल्क है,
कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा इसमें, क्या फील्ड है ये, ब्ला 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 ब्ला। इसी चीज़ को आप जब अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं तो आप हर जगह दूसरों में नुक्स निकालते हैं, अपनी सर्कमस्टेंसेस के बारे में कंप्लेन And that करते हैं। would have been a valid response, by the way. That's how bad halat are. But like yours is Yeah. so much more powerful, no? तो आई encourage everybody to get into that, you know। उस कौन सी किताब थी वो, 7 हैबिट्स ऑफ Highly इफेक्ट effective, हाईली, हाँ. उसमें था कि चेंज कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट, नॉट Yeah. आउटसाइड इन। आप छोड़ दें आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कंप्लेन करता रहूँ कि यार काजी मुझे पसंद नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, अगर काजी मुझे पसंद करता होता मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुला लेता, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें। या फिर मैं खुद इतना अच्छा हो जाऊं कि यार इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू नॉट इनवाइट मी टू हिज पॉडकास्ट, ठीक Yeah. है। Yeah. तो जस्ट स्टॉप ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑब्वियसली देयर एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टेंसेस टू एवरीबॉडीज लाइव्स, बट जनरली आई फील दिस इज अ वे बेटर अप्रोच कि यार जस्ट टेक चार्ज ऑफ व्हाट योर सिचुएशन इज, and inshallah you will be able to make it happen. That's I couldn't, I don't know what more can be said, पता है. I always जब आप आते हो ना, I always hope कि जो है 3 घंटे का होगा, 4 घंटे की होगी podcast. But the problem is you're so concrete with your words, ना. I'm just like, Hey, you are too kind, Kazi bhai. I feel like I've been rambling no, it's been fantastic. incoherently for a while now. I disagree. आप जाके सुन लेना, मैं आपको जब अपलोड होगी आप देख लेना. That's just not true at all. But I think By the way, is this? I think you touched upon this in Ramesh's podcast. Is this distracting or depleting your cognitive capital in any way during the? a little bit Okay. it does, because I want to keep checking because I don't want to mess it up. Right. तो जब वो होता था, जब एक बंदा होता था इस काम के लिए, then I would just be here. Yeah. Right, but it's fine. वो Okay. जो हमने पहले भी बात की ना But कि it's also some muscle memory as well. Eventually, this will just become second nature, right? yeah, eventually, and eventually I want to get someone for it. Okay. Like, but वही आप वाली बात कि you want to take as much responsibility as possible for what you do, right? So अभी वही जो मैंने आपको बोला कि the hope is to not have a lot of lag. तो बहुत सारे लोग जो थे ना, they're just like कि you did podcast with all these wonderful people. I'm like, yeah, they were really kind that they came and they did the podcast. They're like, but then you uploaded all of them in a week. Like, yeah. They're like, nahi, you know, you should milk them and this and that and the other. And I was like, dude, I don't know. I don't think I got into it for this. Right? मतलब उसकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे short clips बना दें या कुछ वैसे कर लें, because like you said, you have to go about it in a roundabout way. Yeah. Have to get more people in, and then once there's more people, inshallah ऐसे ही होता है. And you know, obviously not opposed to exploring Patreon, paids, like, all of that stuff is fine. Yeah, but please make if you haven't made a Patreon, no, nothing. Please do that. This is a mistake I made as well. Okay. I did it way later than I should have. But I also understand क्यों नहीं शायद बनाना चाहें आप, या लोग नहीं बनाना चाहते. But yeah, there's a lot of people who support our work, especially those who live abroad. They're happy to, you know, support you. Yeah. Even with trivial amounts, and it just accumulates and becomes something useful. None of it is. I think आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. I think I should get that done. That's not the but the concern was, I think there was a cognitive dissonance ने कि पैसे चाहिए भी नहीं, मैं तो आर्ट के लिए कर रहा हूँ. आर्ट से पैसे क्या, अभी सबवे खाया था, आर्ट से पैसे दिए थे. अजीब पागल आदमी ऐसे नहीं करते ना. बिल्कुल. तो I feel like there's that, but I feel भाई जब पैसा होगा ना हाथ में, तो उसके बाद आर्ट कर लेना, मैं तो ये कहता हूँ. और उसके बाद आपने जो आर्ट करना है कोई नहीं रोकेगा, कोई मसला नहीं होगा, खुशी से करेंगे. भरे पेट पे आर्ट करना पॉसिबल है, खाली पेट पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इवेंचुअली. हाँ, शुरू में तो शायद आप बड़ी अमेजिंग चीजें कर दें, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा. You burn it up, yeah. You burn it up. तो इस चीज में से निकल जाएं. और लोग इस टर्म को कहते हैं ना, अरे यार वो तो कमर्शियल हो गया. सही है यार, क्या हो गया? Why is this a bad thing? I think that's nonsense. I think, you know what, of all the people in the world, आप सोचो हम आर्ट कर रहे हैं, the person I found to be most no nonsense, I mean, you're pretty no nonsense, Ramesh is pretty no nonsense, but Jokhe was no, that's just, what's the question? This is the answer. Let's move on, right? And so I was like, you know, what do you say to people who say they just do the music or the art for themselves? I'm like, bakwas kar rahe hain. I'm like, do you want to explain yourself? He's like, no, not really. he's like, because अगर आप बना रहे हो, रिलीज क्यों कर रहे हो? मिक्स एंड मास्टर क्यों किया? अपने जेब में रखने के लिए नहीं.
सो ये कमर्शियल और ये वाली भी जो वो है ना बाइनरी जो आपने बोला, इट्स ए नॉनसेंसिकल बाइनरी बिकॉज़ व्हाई देन वुड यू ओके देन व्हाई द लाइट्स? हम्म पॉडकास्ट कर रहे हो, व्हाई द माइक? आई हम्म कुड जस्ट टॉक टू यू. I think inshallah you'd be happy to just talk to me, you know. बिल्कुल I could come over and या so then why are we doing this? And I think I am trying to get there quickly now. I am introducing chapters, short clips, all that stuff, inshallah. So yeah, Patreon is definitely something I would like to do because जो आपने एक और बात बोली ना कि imitate करो. I think maybe I was imitating the model of Joe Rogan or all those things, but I forgot कि Joe Rogan को 15 साल लगे थे, हाँ right? So या तो मैं 15 साल तक ये करता रहूँ, हो सकता है करता रहूँ. He's 55, I'm 30, 15 और साल करूँ 55 हो जाऊँगा मैं, you know. But वो और भी काम कर रहा था, right? He was doing stand-up comedy, this and that and the other. So I feel like I'm kind of finding my own path, inshallah. वो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से. यार एक चीज जो है ना ऑफ ऑल पीपल बाबर आजम से मैंने सीखी है एंड वो हमेशा जो बॉयज को बकअप करना चाह रहा होता है तो वो कहता है कि यार एफर्ट हमारे हाथ में है. और बड़ी सिंपल सी बात है बट व्हेन इट रियली स्ट्राइक्स यू व्हाट दिस सेंटेंस द विजडम इट होल्ड्स इट इज इन फैक्ट ट्रू. नो मेरे अब्बा मुझे कहते थे कि यार रिजल्ट की तुम परेशानी ना करो जब एग्जाम्स होते थे. जस्ट मेक श्योर यू डू द बेस्ट जॉब यू कैन एंड दैट इज फॉर्चुनेटली आई फील दैट इज ऑल दैट वी कैन डू. I think Akbar bhai, pata hai, that brings me to this very interesting thing. That absolutely that, but it takes a certain amount of confidence to do the work that you do. आज सुबह ही आपसे पहले जो गेस्ट थे उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि and confidence is a very I would argue this. I would argue with anyone कि confidence is a skill. Like most of the things, confidence is something that is developed, and confidence you build. Chris Williamson ने ये बात की, Joe Rogan ने ये बात की, सब ने ये बात की कि confidence is something you build by accumulating a stack of undeniable proof that you are who you say you are, right? मतलब for yourself. मतलब मुझे जो है जब when I say that I am something, when I tell you that I do a podcast, what is behind me that's encouraging me or that's anchoring me in this कि हाँ भाई मैं आपको ये बोल सकता हूँ, आप एक पूरा इंसान है, मैं एक पूरा इंसान हूँ, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, you could challenge it. What is going to enable me to withstand that challenge, right? So how did you build up confidence for this, do you think, earlier? Abhi to zahir hai, must feel like this has always been the case, right? But what was the first haan theek hai theater kiya, how do you inspire someone to build up confidence? Because I do feel a lot of people are hurting and they'll hurl insults and they'll hurl pain because they are in pain, but they just don't have the confidence and they don't know how to get confidence. How did you get confident? That's a very interesting question. I think I don't think I have a fleshed out answer for that, but I can say for myself at least, just based on the fact that I have academically a scientific background, and for 6 years of my life I've been deep into engineering, 7 years in fact, and before that obviously वही जो उसी टाइप की पढ़ाई होती है. But generally how I view the world is pretty much from a scientific perspective. What that means is it seeps into various things. What that means is that when I see that there is evidence for something, then it must be true. ठीक है? So let's say I am not sweating right now. Therefore, it must be true that there is air conditioning on. ठीक है? I am visible right now. Therefore, it must be true there is some illumination. ठीक है? Just based on that, as I was doing comedy for all of these years, देखें हर आर्टिस्ट में एक इम्पोस्टर सिंड्रोम तो होता है. 200% होना भी चाहिए. वो मेरे अंदर आज तक है. I feel like, you know, sometimes the jig is up. These guys are going to figure out what मैं चूतिया बना रहा हूँ इन लोगों को. On the flip side, having done this as long as I have and across so many shows, there is evidence that people are enjoying themselves. Fortunately for comedy and other art forms, I guess, live performance wise,
there's direct evidence of your Oh, right away. of Right you away. doing well. Yeah. So if I am telling a joke and people are laughing and clapping, therefore there's evidence that I am doing a decent job. And if that is accumulating over several years or shows if it is in fact growing as well, so then I can convince myself and feel confident in my ability as a comedian. I think that's super powerful, and I think that brings me to another very interesting thing. एक तो I think आप जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं ना अकबर भाई, आपकी वो जो ऑनलाइन पर्सोना है ना, वो थोड़ी सी शैटर होना शुरू होती है बिकॉज पीपल लाइक भाई ये भी बर्गर है, ये काजी तो बर्गर है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, yes. That's just key. Okay, but you said imposter syndrome, and then you described how you understand your confidence to where you understand your confidence to come from. So there's this other thing that happens, and again, there's other people that intelligent people who have come up with this term, imposter syndrome का बड़ा भाई जो ज़्यादा मतलब पान मावे खा रहा होता है और जो है ना ज़्यादा फड्डे किए हुए होते हैं उसने, और वो उस ज़माने में उससे बड़ा हुआ होता है जहाँ पे हाथ से लड़ाई होती थी, जो इतनी जल्दी आपका जान नहीं छोड़ता. ठीक है. उसका नाम होता है imposter adaptation. Okay. So imposter syndrome is, okay, yaar, I might not be who I say I am, and they'll find out. Imposter adaptation is कि every time you disprove my younger brother, which is imposter syndrome, I will come back and be like, हाँ वो that was a one-off thing ना. यार, I'm a comedian. Why do you say that, Akbar? Well, because I did a show at Club 432 and I made some people laugh. Yeah, but some people from defense. Yeah, I'm a comedian. Why do you say that? Well, because I make everyone on the internet laugh. People on the internet, वो वैसे ही हंसना चाह रहे होते हैं, bored है. Yeah, I'm a comedian. No, you're not a comedian. Why do you say that? Well, because I went to America, sold out some shows. I'm a comedian, right? So imposter adaptation जो होती है ना, artist के साथ imposter adaptation आती है. At length इरफान भाई को मैं जो है ये बाकायदा तंजिया तौर पे मैं बोलता हूँ कि आपको imposter adaptation है, so you're just going to have to keep outdoing yourself. You're going to have to. You're going to need to, right? And he's just like, okay, whatever, right? So and the same thing goes with you, and the same thing goes with anyone who's practicing this way. Is you need to keep pursuing excellence, because if you pursue excellence, you will keep building confidence, and that's what confidence is just proof that yaar main ye cheez hu, jo bhi मैं हूँ, right? And that will fight imposter adaptation. ठीक है, अब now that we have my turn to say super powerful. Super powerful. Redundant है ना, super powerful वैसे. That's horrible. Do you, when you were doing your comedy workshop, would you ever teach people how to write? To write jokes, yeah, specifically. Yeah. Do you write? Kazi bhai, I think again with the arts, the romanticizing of it, we often think these are things that cannot be taught. Yeah. Which is not true. I feel like any art can be taught to anyone and they can excel at it. It's formulaic. It's a formulaic understanding of art. That's awesome. तो जाहिर सी बात है इधर भी कॉमेडी राइटिंग जो है उसमें भी कुछ टेक्निक्स हैं, एंड एज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दोज टेक्निक्स तो वो आपके लिए सेकंड नेचर बन जाती हैं. सो नाउ व्हेन आई एम राइटिंग, आई एम नॉट थिंकिंग कि यार मैं ये वाली टेक्निक लगा रहा हूँ या ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ. वो अब एक मसल मेमोरी का हिस्सा है. बट कोई बंदा जो स्टार्ट कर रहा है, जैसे लेट्स से मैं एक नए कमेडियन को वर्कशॉप में भर्ती करता हूँ, उसको मैं 4-5 टेक्निक्स बता सकता हूँ जिसके थ्रू वो शायद that might be a good starting point for somebody who's looking for a starting point. And there's not any compulsion to learn these techniques even. A lot of people just are funny and they just need to just do it enough times to figure out why they're funny. तो ये है, सिखाई ज़रूर जा सकती है. Perfect. और इसका मैंने एग्जांपल आपको लास्ट पॉडकास्ट पे भी दिया था, जो कि वो पूरी थ्योरी थी. बेसिकली बिनाइन वायलेशन. वो है सबवर्जन कह लें, जो भी कह लें, एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करना. इस चीज़ को मुख्तलिफ तरीकों से अकम्प्लिश किया जा सकता है. बट what is your particular writing process like? And I think this is a good place to end the podcast, because people will often be confused about how you come up with your, like, because देखो, how is it that your comedy is so relatable? You must have thought about it, ना? ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा ना? So what is your writing process? Like, do you sit down? Do you have a mug of coffee? Is it in the morning, at night? जब आप बैठते हो, आप बोलते हो, now I'm going to be funny. How is it? How does that work?
Yeah, it is the most depressing part of my work and the most painful as well. If I was a better writer or maybe a more disciplined writer, my output would be significantly more. मेरा जो रैंटी रोने का process है, that is bottlenecked by the writing process. I could make, the editing of the video and recording the video, the entire process takes maybe 1.5 hour. That's ठीक fantastic. है? That's really good. Yeah. रोजाना मैं ये काम कर सकता हूँ. राइटिंग का जो है दैट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड स्टैंड अप और उसका मुख्तलिफ है. तो आई विल इवन से कि शायद स्टैंड अप का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा आसान हो गया है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने अभी एक जोक लिख लिया, पहली दफ़ा मैं जाके करूँगा ओपन माइक नाइट पे, उधर रिकॉर्ड कर लिया मैंने वो शो. देयरफॉर इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस जोक इज़ वर्किंग, दिस इज़ नॉट. You see, so now I can go back, remove the stuff that isn't working, or improve it, and come up with more stuff that is perhaps funny. Try it again. I will know. So there is there is almost like evidence, like I said before, of something being funny or not. It's almost scientific Yeah, at this point. Yeah. with the stand up process. वीडियो का जो प्रोसेस है वो बहुत मुख्तलिफ है, बिकॉज इसमें मुझे सिर्फ तब पता लग रहा है वंस द वीडियो हैज़ बीन पोस्टेड वेदर दिस इज़ फनी और गुड और नॉट. ठीक है? एंड ऑब्वियसली इट डजंट हैव टू बी द सेम एज स्टैंड अप, बट वो आई फाइंड एंड समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग दिस वीक, सबसे ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिव तब हो रहा है जब मैं एक क्लासिकल राइटर की तरह अप्रोच करूं कि भाई आज मैंने 1000 लफ्ज़ लिखने हैं. That's it. And when I do that, I find my productivity increases exponentially. Because when I have not been doing this, मैं हफ्ते में एक वीडियो बना रहा था. Mhm. ठीक है? और इस माइंडसेट से बना रहा था कि यार मंडे को वीडियो डालनी है, तो ये काम फिर मंडे को दोपहर में शुरू होता था और तकलीफ दे रहा हूँ अपने आप को, और फिर बन जाती थी, लेकिन हफ्ते में एक बन रही थी. एंड सिंस दिस इंटायर प्रोसेस वाज सो पेनफुल एंड डिबिलिटेटिंग that I would require a week off. Whereas now, what is happening is कि I have set no expectations from myself except कि मैंने दिन के 1000 लफ्ज़ लिखने That's हैं. it. That's fucking it, Progressively, yeah. that is becoming easier. Yes. It takes less time. And two other pieces of advice from writers that have been very helpful. One from Jerry Seinfeld, legendary comedian. At the end, basically, he posits that inherently writing is a process that is basically voluntarily subjecting yourself to pain. ठीक है? Okay. एक पेनफुल काम है ये, आपको भी पता है, ये हर किसी को पता है. हाँ. एक्चुअल शायद प्रोसेस ऑफ राइटिंग ना हो, अपने आप को कन्विंस करना कि यार लिखना है, हाँ. ये सबसे ज्यादा तकलीफ Don't दे go काम out है. with your friends. Don't spend time with your family. बिल्कुल. Just sit down and for an hour. Exactly. Or whatever. So, चूंकि ये एक तकलीफदेह काम है, therefore there needs to be a reward at the end, and you need to specify how long you're going to write. So let's say if it's an hour, if it's 45 minutes, you need to stop at 45 minutes or an hour and then reward yourself. That could be a cigarette, that could be food, that could be a drink, that could be watching something, that could be the dopamine hit you get off checking your note, whatever. ठीक है? इसके आगे कोई रिवॉर्ड होना ज़रूरी है. दैट इज़ गोइंग टू वायर योर ब्रेन दैट ये सिर्फ अपने आप को तकलीफ देने का काम नहीं, इसके बाद मज़ा भी आता है. और दूसरी चीज़ आई फॉरगेट किसने कही थी है, बट ये मुझे बड़ी हेल्पफुल लगी कि मैंने एक ब्लॉक ऑफ टाइम निकाल लिया, लेट से 1 घंटे का. ठीक है? इसमें सिर्फ 2 कंडीशंस हैं. आई कैन ईदर राइट और आई कैन नॉट राइट, बट I cannot do anything else. Nothing else. Yes. Yes. Very good. और बहुत अच्छा है यार ये. और Fantastic. इसकी वजह से मैं अब पहले दिन जैसे आज 1000 लफ्ज लिख लिए, कल लिखूंगा 1000 वर्ड, इंशाल्लाह. स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी. उसके आगे सिर्फ 1.5 घंटे का काम है और वो वीडियो कल रात निकल जाएगी. इंशाल्लाह. That's fantastic. I think सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे. एक तो one of the things that writing instructors would obviously encourage us to do also is ये वाली बात कि आपका काम कुछ भी नहीं है. Write shit. Don't even care about grammar. लेकिन 1000 लफ्ज दिन के. दूसरा, another exercise they would make us do is called brain dumping.
So you know, you wake up in the morning, stomach's all full with that delicious hot and spicy, obviously, right? And so what do? You take a dump, right? Similarly, your brain needs to take a dump as well. So first thing, nihar muh, nothing else, no consumption of social media, nothing else. You take a pencil, take a paper, and you just start writing. Even if मतलब आपको पता है हमारे जो निब्बे होते हैं, even if all that comes to your mind is sex, right? Write sex as many times, और टाइम लिमिट होता है 20 मिनट तक लिखना बंद नहीं करना, टाइप करना बंद नहीं करना, जो भी करो मतलब आई थिंक इट हेल्प्स if it's the physical act of writing, but really doesn't matter. टाइप करो या जैसे भी, for 20 minutes just keep writing. The most vehement thoughts, the most vulgar thoughts. Oh, I really think everyone hates me. Oh, I'm no good at all, nothing. Oh, maybe I should be a comedian. Maybe I should. मैं क्या मुजरा कर रहा हूँ? It doesn't matter. We'll just keep writing, write for 20 minutes, and once you're done with that, you will understand कि all of it comes a little more comfortably. There will be more discipline. Because जैसे आप हल्के हो जाते हो ना बाथरूम में जाने के बाद, it's like that. And दूसरी चीज़ हजार वाली, end it on a quote. इस पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा, ऑफन मैं तो खैर ये नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है कि एक राइटिंग सेशन के मे बी 10-15 मिनट पहले के तकलीफ दे हो रहे हैं, और फिर एक वो मैंने पढ़ा था कहीं, उसको शायद कहते हैं फ्लो स्टेट. Once that is achieved, it just feels like almost fluid. It just feels like these words are just exiting my fingertips and via the keyboard appearing on my screen. That's it. It's and like, that is almost effortless sometimes. That's when you tell the story, na? शुरू में तो you're minding the grammar, you're minding the form, किस syntax, किस किस्म की चीज़ है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए, किस ज़बान में बोलूँ मैं, English बोलूँ, उर्दू बोलूँ. But after that, it's just the story. बिल्कुल. The story comes after. बिल्कुल. I think Ernest Hemingway थे या कौन थे, लेकिन मुझे कोट याद है, मुझे याद नहीं किसने बोला था. They were like, I only write when I'm inspired. I only write when I'm inspired. It just so happens that inspiration finds me every morning at 9 a.m. when I'm sitting at my desk. Yes. Right? So sure, yeah, inspiration, but just do the work. You know, it's not even motivation. You need to remove how you feel about it. You just have to do it. Exactly. I think that's fantastic. Akbar bhai, always fantastic. Thank you. Thank you for coming on. Thank you for doing all the work that you do. Thank you for having me. I can only hope you enjoyed this conversation Always as much do. as I did. Always do. And it's not a matter of thanking you. It is an honor and a privilege. And mashallah and congratulations once again. To you as well. Please, कोई भी चीजें जो आ रही हैं dates के हवाले से, वो बता दी सारी. बस हो गया. यही है बस. Okay, यही है. And Akbar Chaudry on YouTube, Akbar Chaudry on Instagram, and Akbar Chaudry hopefully in a comedy club soon, inshallah. Inshallah. Yeah. Fingers crossed. Assalamu alaikum.